Now, Aurobindo, your first question was why TSS particle surface charge is negative in nature. It is because the colloids and TSS both they absorb the negative ions from the water onto their surface and they become negatively charged. And when they become negatively charged, two particles becoming negatively charged, they started repelling each other. And that is why a coagulant is required, mostly cationic. When they are negatively charged, you have to do the charge neutralization and convert them into microflux. So for this purpose, alum was used. Then you switched on the evolution take place like this, that they switched on to uh, first ferric alum was there, then they switched on to non-ferric alum. Later on, they switched on to PaC, polyaluminum chloride, and then now the newest technology which they are using as coagulant is aluminochlorohydrate. But we must always watch that aluminium salt or ferric chloride or ferrous sulfate is not overdosed. Ferric chloride and ferrous sulfate are also coagulants. Wherever you are using membrane technology like RO membranes, etc., you go towards ferric salts because you can remove ferric salts. Otherwise, aluminium will become make irreversible scale in the membrane. So your first question is answered that TSS particle surface charge negative in nature because of adsorption of negative ions from water and also the organics. So adsorption of negative ions and organics from Okay. water. All Okay. right. Okay, sir. Now your second question is physical and chemical significance of colloidal particles. Let me share the screen so that everybody can see this also because I'm writing it here. Okay, are you able to see my screen? Are you all able to see my screen? Yes, sir. Okay, so these are the questions from Aurobindo Das. Why TSS particle surface charge is negative in nature? So adsorption of negative ions and organics from water. What is the physical and chemical significance of colloidal particles? The size. Okay, size of those particles. See the size of those particles are ranging from 1 nanometer to 100 nanometer, or you can say zero point 0.1 microns to 0.001 microns. It takes 4 years without any coagulation or without any flocculation. It takes 4 years to settle zero point 0.1 micron, and 0.001 micron will never settle down. And that is the problem with colloidal particles, even with silica. Now, it's not only silica which can be colloidal, but there are other elements which also can be colloidal. But we are much worried in power plant because of colloidal silica which get carried over in the steam, okay, and forms or which gets passed from the DM plant, goes into the drum and increases the silica because colloidal silica is something which molybdenate will not react with. You will not find colloidal silica in the lab, but once it is exposed to higher temperature and pressure, it will convert into reactive silica and suddenly you will find higher silica in the boiler drums. So that is why it is important that we must
take care of colloidal particles. How to take care of them? See, one thing which we primitively used before the evolution of the ultrafiltration, uh, ultrafiltration that also should be less than 10,000 molecular MCW, we call it micro, what do you call? Uh, 10,000 molecular weight cutoff, okay, in Daltons. So before that, before these membranes came, what we used to do, we used to add lime and dolomite, or we used to add dolomitic lime. Earlier, when we had steam engines in railways, we used to use this process of adding dolomitic lime and making the water soft as well as with lesser silica. And colloidal silica was also getting reacted with that and going down. But anyway, that was not 100% successful. Now the ultrafiltrations which are of 10,000 molecular weight cutoff, which many of the people, especially engineering people, do not understand. They take 1 lakh molecular weight cutoff, and then the this colloidal silica gets that passes through that UF also. So you must choose 10,000 molecular weight cutoff. This molecular weight unit is Daltons. So 10,000 molecular weight cutoff, ultrafiltration can remove that colloidal particles, and then reverse osmosis membranes remove these colloidal particles to 100%. All right. So chemical significance is actually depending on the elements and their solubility at high temperature. Now, silica solubilizes at high pH. Okay. Remember always, silica solubilizes at high pH. It does not deposit like calcium or magnesium does. Okay. But once the saturation has come due to the temperature, it may deposit. Okay. Any more clarification, Aurobindo, you need on this physical and chemical significance of colloidal particles No, sir. You mentioned the molecular weight per of unit of measurement ultrafiltration? Dalton. Yes. Ultrameter. Uh, Dalton will be mentioned in 10,000 Dalton, Dalton. 10,000 Dalton molecular weight. Dalton molecular weight. Okay, okay. Okay. All right. ORP. Now we come to ORP. Sir, one question, sir. Let me first complete Aurobindo. Till then, you just Sir, write that regarding the question with second me. point, I have some questions, sir. Doubt, sir. No, I thought to take one by one actually. Okay, okay, sir. Okay, sir. Okay, you can keep that thing on. Okay, write it somewhere. Okay, sir. Okay, Okay, sir. okay, I will answer it. Okay, sir. Okay. Okay, I will answer it because I will not forget the chemistry. Okay, and you are there in the uh, today's meeting also. So ORP importance in feed water in AVTR treatment. Now, what do we mean by AVTR? Aurobindo is all volatile treatment reducing, but that does not say that you should not use uh, trisodium phosphate. Okay, if it is a drum boiler, you can use trisodium phosphate, and still it will be called AVTR. Okay, all volatile treatment reducing. Now, reducing means you are using a reducing agent, either hydrazine or carbohydrazide or DEHA, or there are many MECO. Okay, but hydrazine is the safest and best treatment chemical. Okay, safest means, why I'm saying safest, because I have never come across even a single incident of a person suffered of cancer due to hydrazine.
Okay, we know that chewing tobacco or smoking causes cancer. Yes. Okay, there are evidences. But with hydrazine, I have never come across any evidence of person suffering of cancer. But yes, some of the skin, elements are there with hydrazine. That is true. But hydrazine does not produce any kind of byproduct which harms the boiler. So that is why NTPC even still now they have been with hydrazine. Now ORP importance in feed water. It is the reduction potential we are measuring. Normally in AVTR we should have 150 to 250 millivolts minus 150 to minus 250 millivolts in economizer outlet. Is that okay? Have you understood or you need some more feed, Arvindo? Sir, where how we measure this? Sir? We have ORP meters. Ravi, can you please elaborate on him how we measure? There are portable ORP meters we get. You can use portable ORP meter as Ravi said, and you can use online if your plant is big. Okay, if you have the potential, like a Ravi plant is not big, it's about 100 megawatts only. But your plant, if it is big, if it is 210 megawatt and above, you should install a online ORP meter. You should install an online ORP meter. portable would also do. You can take Yes, sample points. yes. Best, Okay. Understood, Arbindo? Yes, sir. Anything more in this? Just a moment. Yes, sorry. I'll keep my phone in mute. I was getting a call from China. I hate China here. Yeah. So, Aurobindo, you have any more question on this? No, sir. Are you sure that you are okay with this answer? Sir, actually, minus 150 to minus 250 millivolt. Hmm. I were maintaining this uh, this wire. Hmm. You have to maintain in this range. এতটা রেঞ্জের ভিতরে মেইনটেইন করতে হবে ইকোনমাইজার আউটলেটে জলের মধ্যে No, actually, we are not measuring this. We are only you- maintaining D. We are checking only DO only, sir. that is what is the new EPRA guideline has suggested. Rather than measuring DO, rather than measuring this and that, actually we need reducing environment. DO measurement is okay, but this measurement is very important. Okay, if you are measuring this, then you are sure that your magnetite layer is intact. But Rizwan, it is different to your plant, huh? Okay, I'll talk to that in your session. Okay. So here in a subcritical station,
below 250 megawatts, okay, you must maintain below 210 megawatts, you must maintain a negative ORP unless until your water quality is too good to go towards AVTO. Aurobindo, কিছু doubt আছে? না স্যার, ওকে স্যার। Okay. Now, Aurobindo, I'm going to your fourth question. The fourth question is asked, what is the concern of measurement of for orthophosphate, inorganic phosphate, and organophosphate, delta phosphate? I need some clarification on this question. First is, I think this is for cooling water treatment. Cooling water treatment, sir. Yes. So orthophosphate is actually inorganic phosphate only. So these are not two different things. Okay. Now your question becomes like this. In CWT, okay, what is the concern? Why we are measuring orthophosphate, organophosphate, delta phosphate in CWT, right? Is this Yes, a sir. question? So I'll rephrase it. Why we are measuring fine. So actually, orthophosphate is a corrosion inhibitor. Only. It could be phosphoric acid also. While organophosphate, which includes SHMP, HEDP, and PBTC. Okay, these are threshold inhibitor crystal modifier, and they are also acting as corrosion inhibitor. So depending on the water quality, we who design the treatment, we decide, how much organophosphate, orthophosphate, and these things should be there in the water. And since we do not 100%, we are not sure that supplier, because orthophosphate is a low cost chemical, while SHMP is not used as much today, but still people can use SHMP. But HEDP, PBTC is what is actually should be used. Okay, these are two phosphonates. So these two phosphonates are costlier. In Indian rupees, it's about 250 to 300 rupees cost. So when we design a treatment program, we design it in such a way that there is a threshold inhibition and also a corrosion inhibition. But if the corrosion
the water is having more corrosive propensity, and we see that we need more phosphate to stop that. We need to have a gamma iron into phosphate layer on the surface. Okay, then we will have to add orthophosphate as well. Normally, orthophosphate is added with zinc. Because zinc is a very good anodic inhibitor. Okay. Here also zinc is sometimes added depending on the water quality. While orthophosphate is a cathodic corrosion inhibitor. Now, if you understand, first is understanding the basics of this. Why do we need cathodic inhibitor and anodic inhibitor? Is because always corrosion is an electrochemical cell formation, and there will be formation of anodic reactions and cathodic reactions, and both are interdependent. If you reduce the cathodic reaction rate, the anodic reaction rate will also reduce. So when we use either of these or Hello. both. Hello. 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 Yes. తర్వాత మాట్లాడతాను హలో రవి. నేను తర్వాత మాట్లాడతాను, మీటింగ్లో ఉన్నాను. హలో, మాట వినిపించట్లేదు అనుకో. అంటే మాట సౌండ్ నాకు దాని. It's okay. Ravi is having a call from his family, maybe. Okay. We'll go back to the question. Okay. That orthophosphate is actually a cathodic inhibitor. But in fact, in high temperature zones, this orthophosphate combines with calcium and becomes tricalcium phosphate and deposits itself. So nowadays, orthophosphate is not used so much. Now, if your specification has asked the vendor to supply both orthophosphate and organophosphate, then you need to measure orthophosphate, organophosphate, and the delta phosphate of total phosphate and orthophosphate is actually organophosphate. So what we measure is total phosphate and orthophosphate. We do not measure the organophosphate. It is the delta phosphate which gives us what is the organophosphate. Have you understood, Arvindo? Yes, sir. Yes. I'll explain this in Bengali to Arvindo. Okay. That Arvindo, যদি তোমার কোম্পানি চেয়ে থাকে কি আমার অর্থোফসফেটও চাই আর অর্গানোফসফেটও চাই, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে টোটাল ফসফেট আর অর্থোফসফেট মেজার করতে হবে, যেটা দিয়ে আমরা ডেল্টা ফসফেট পাবো। আর ডেল্টা ফসফেট ইজ ইকুয়াল টু অর্গানোফসফেট। বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. বুঝতে পারলাম। Any more question on this, Aurobindo? No, sir. Sure? Yes. Okay. If you have any more, you can WhatsApp me. Okay. Now, many people do a mistake. Many people I've seen doing a mistake in this fifth question. Cooling water scaling and corrosion indicator. LSI stands for Langmuir Scale Stability Indices or Index, not indices, index. Langmuir Stability Index. And RSI stands for Reisner Stability Index. In cooling water system, when the pump velocity is 2.4 meter per second or above 2 meter per second, what we should be using? So it is actually like this. Water velocity below
meter per second must use LSI. Water velocity above 0.6 meter per second must use RSI. If you don't have Nalco Water Handbook, second edition, in second edition Nalco Water Handbook, I think page number 10.8, okay, will have this in writing. Or if you want, I can take a pic and send it to you. Okay. So water velocity determines what indices you need to use. Both uses PHS, both forms finds PHS, and both uses PHA, actual pH. But the formula differs in them, within them. 2 PHS minus PHA, or PHA minus 2 PHS. Like this it goes. So in LSI, minus is corrosive, and plus is scale forming. While in RSI, below 6.4 scale forming, and above 6.4 is corrosive. You can refer similar page of Nalco Water Handbook, and it is also there in Buckman Water Handbook. Okay. Any other question in this, Aurobindo? Anything more than this you want to know? Sir, calculation part, sir, how we will calculate? Calculation part, huh? Calculation part, I have to just give me a moment. I'll try to find it out. Okay, actually I use Excel program. Yes. Okay, but if I can see something here. Dynamics. Just have a little bit of patience. I'm coming to that. Hmm. There.
Here is the, what you can do is you can take a screenshot of this. Take a screenshot, Arvindo. Yes, sir. I'm taking. Are you on a laptop? No, sir. I'm on mobile one. Yes, sir. Taken, huh? 1 minute, sir. Wait. Okay, sir. Taken. Okay. But the best way is to go through this. If you all need, I can supply this to you. Okay, this is JustChem Solutions product. Here you put the things in this yellow box. Okay. Okay, Here sir. you have to put magnesium as magnesium. What you are measuring is as CaCO3. Yes. Okay. You put all the things and then you get RSI, PSI. PSI is used in this. Actually, if you TEP unhide, then you will get LSI also. LSI, RSI. Precorious is used in reverse osmosis, and Larson Scold Index, LAI. This is Larson Scold Index. It is used in water having high chloride or high sulfate, like you are having, or when you are in Haldia. So in Yes, sir. Haldia, you will be having water with high chlorides and high sulfates for at least 5 months in a year. To 5 months, sir. From April Yes, to March, yes. April to. So you must go with LAI, and you send me in a WhatsApp. Okay. After this, you send me in a WhatsApp that you need this, or else I'll send this to all of you who are participating and who have. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Sir. All right. This is having its own calculations inside. Okay. All these like Precorious index calculation, LSI, LI, LAI, Reisner, Langelier, everything is there. And in one page, you can find everything and you can check them. Ravi, this will be useful to you as well, right? Okay, sir. All right. So I save it here. Okay, coming back to your next question. Is there recording started? Is there anything else? Okay. We are only 4 people who have joined. Huh? Okay. 15 has nominated and 4 have joined. All others have asked for video, training videos. So I became a videographer actually these days. Okay. So you understood how PHS and PHA is calculated. You will understand going through that screenshot. Okay. How PHS and PHA are calculated. And it is given, the method is given in that. Right. Now, RO chemical cleaning process. RO chemical cleaning process actually is dependent on type of fouling you have in RO. RO. We should have a
Now you just have a little more patience and see this. In RO, actually the cleaning process is not as simple as you add caustic and acid and you do the cleaning. Okay, you have to be very cautious on what is increasing and what is decreasing. Here is that. Okay, you have to calculate these four before you plan for cleaning. It's not so simple that you clean with acid and then caustic or caustic then acid. Okay, first is you have to calculate the normalized permeate flow. Then you have to calculate the net driving pressure. Then you have to calculate the normalized salt passage. Then you have to calculate the normalized pressure differential. And then go into this chart. NSP is normalized salt passage, NPF is normalized permeate flux, NDP is net driving pressure. Or you can go into this normalized pressure drop, normalized pressure flow, normalized salt passage. Then you have different possible causes. It could be metal oxide, which is causing the trouble choking. It could be colloidal fouling. It could be scaling in the last stage of the membranes. Metal oxide and colloidal fouling will be in the first stage of the membranes. Biological fouling or any stage, organic fouling, all stages, oxidant, high chlorine, first stage more severe, abrasion, carbon or silt going inside. Again, first stage will be more severe, pouring or glue leaks. Then again, it will be random. For that, you have to do a probe test. And recovery too high, it could be all stages. This is for your field engineers, okay, because this is not normalized calculation, but these are based on the normalized calculation. Now here you have metal oxide, again mineral scaling, colloidal fouling. You can follow these three and come to a conclusion and then decide what cleaning solution you have to use. This is telling you what could be the foulant. You have found out what could be the foulant through this, right? Metal oxide, colloidal fouling, scaling, biological fouling, organic fouling, etc. Pouring leak. Similar here, right? Metal oxide, mineral scaling, colloidal fouling, polymerized silica, biological fouling, organic fouling, chlorine damage. Okay, I've put it into my software called Romo, and it tells, that software tells itself that what kind of fouling I am going on with, which I've sold to US. Okay, I sold my IP to America. So from these these are turned into algorithms, and from that algorithm codings are made, and codings has been sent to them. So now the system is telling that how I got fouled. I am fouled by calcium carbonate scale, or I am fouled by metal oxide, or I am fouled by inorganic colloidal foulants, or I am fouled by polymerized silica. Then you have to use these numbers of gentle cleaning. That these numbers will come. 1, 2, and 3 are gentle cleaning. 4, 5, 6, 7 are harsher cleaning. And these are the proportions of those cleaning. There is don't use any kind of specific cleaners like specialty cleaners. Go with this, you will find very good solutions. Okay, the first, second, third are milder solutions. Okay, first is low pH with 2% citric acid, very simple. Solution 2 is high pH cleaning, target pH of 10 with STPP, sodium tripolyphosphate, used in soaps, and sodium salt of EDTA. Okay, for what these two are used?
one is used for calcium carbonate, two is used for calcium barium. So if you are having seawater RO, then you must use two. If you are having normal river water RO, then you must use one. Haldia, you must use two because you are getting seawater ingress in Haldia. Okay. Yes. Okay. So you must use number two in Haldia. Number three is specific for what? Biological matter and NOMs. And Haldia still has biological matter and NOMs. I've studied the water chemistry of your river water, which is coming through Haldia Municipality Corporation or JUSCO. JUSCO is supplying you the water. I've studied that, and I found that I have to first use solution 3 and then I have to use solution 2, and I have to do it as per circulate for 1 hour, circulate for 30 minutes, soak for 30 minutes, then circulate for 1 hour, soak for 1 hour, and then circulate for 30 minutes and soak for 30 minutes, and then circulate and drain. Did you get it? Otherwise, it is recorded Yes, sir. as well. You will remember this in the recording as well. Okay. Mhm. Okay. So going back to your question. So answered there. Okay. How to check? Now, how to check the chemical process? Chemical cleaning process in video. Okay. You will find it in the video, whatever I have explained. And then what to be checked? Checked is turbidity, calcium, magnesium, and silica. You may check, may or may not. You may check, I think. May check TOC if you have analyzer, or otherwise KMNO4 number should be less than 10. Okay. So as turbidity reduces, means it's getting cleaned. Or equal to inlet conductivity, or equal to Inlet turbidity. So you understood. Similar for calcium, magnesium, and silica. Got it? You understood? Okay. বুঝতে পেরেছো কি শুধু ওকে এমনি বলছো? हेलो. হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো কি এমনি ওকে বলছো? মানে समझ में आया कि वो ऐसे ही तो ओके बोल रहे? না না তো समझ में आ रहा है. ओके. স্যার আমি কি বলছি এই যে টিওসি কেমন ওইটা তো টেস্টটা তো অনেক টাইম লাগে স্যার. ডিউরিং ক্লিনিং অ্যাক্টিভিটি এটা কি চেক করানো যাবে? টিওসি কোথায় চেক হয়? তোমাদের কাছে কিছু মেথড আছে চেক করার? টিওসি না, এটা কেমন ফোন নম্বরটা যেটা আমার অনেক ইনকিউবেটর. সময় লাগে। কেমন নম্বর চেক করা শুধু ইনিশিয়ালি আর একদম এন্ডে। হুম হুম. ইনিশিয়ালি আর একদম এন্ডে, এই দুটোতেই চেক করা যাবে কেমন নম্বর। পরে চেক করে নিতে হবে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, करेक्ट। आगे একটা और পরে একটা, मतलब शुरू में एक और बाद में एक। ओके. टीओसी एनालाइजर यदि है तो फिर बीच बीच में चेक कर सकते हैं, लेकिन टीओसी एनालाइजर नॉर्मली 600 मेगावाट के पावर प्लांट में नहीं होगा आपके पास। ये 1200 मेगावाट के ऊपर वाले पावर प्लांट वालों को रखते हुए देखा है मैंने। ऐसे जीपेक भरूच जो 655 मेगावाट ड्यूल फ्यूल कमांड साइकिल पावर प्लांट था, सिर्फ 655 मेगावाट्स में ही उसने टीओसी एनालाइजर रखा था। एनीवे
How antiscalant dosing works? It works in two ways. Okay, it is having uh, something like HEDP PBTC. Normally, PBTC is used, which works as uh, threshold inhibitor. For that, you have to understand what is threshold inhibitor. So, what I will do is go back to one of the. Hmm. Now, how does a scale formation take place? This, if you understand, then you can understand the whole system of scale inhibition. Okay. So, what are the common responsible ions? Calcium, magnesium, iron, aluminium, barium, strontium, silica, carbonate, and sulfate and oxides of these cations. Right. So, the first step is saturation. Why these ions? Because these ions has irreversible solubility. Okay. Sorry, reversible solubility means as the temperature increases, their solubility decreases. First step is saturation. When the concentration increases, it saturates. So where does the concentration increases? It increases towards the tail end of the membranes or the second stage of the membranes. Then the supersaturation. Here we can control it by pH and temperature. Temperature is not in our hand. So pH, what we can do is we reduce the pH. That is why you add HCl or other citric acid into the RO inlet, into the RO feed water, right? So what you actually in RO, what you check is PSI, Precarious Scaling Index, right? So you control the PSI. If it goes uncontrolled, then crystal modification takes place. Here you use crystal modifier, HEDP or PBTC. Normally PBTC is used because it is better acting things and lesser concentration would be required. Phosphobutane, tricarboxylic acid. Then fourth is precipitation. Here we use polymers. Nowadays we are using terpolymers mostly in this place. So use PBTC plus terpolymer to form a RO antiscalant. And these are the steps. So I need to stop step 3 and step 4. For that, in RO antiscalant, I will add crystal modifier and polymeric dispersant. Nowadays, we are adding some amount of uh, biocide also because we want to avoid the scaling inside. This is how the crystal modifier works. Okay, it breaks the crystal of say calcium carbonate or anything that phosphonate will break so that two crystals cannot come together. This is how the polymer will work. They will keep the particles in dispersion. They will not allow the particles to come together. They are actually adding negative charge to the particles. Okay, even if in the on the crystals also, it is adding negative charge. So if you are adding crystal modifier, then they will be remaining in dispersion. They will not settle out. While if you do not add crystal modifier, they will settle out. And what are the crystal modifier? They're HEDP and PBTC. So we should add crystal modifier. So these are the full form of those crystal modifier. Nowadays, I am using phosphonobutane
tricarboxylic acid, PBTC. Just a moment. Nowadays, I'm using PBTC, but in the case where I do not find that they are dosing any chlorine or something in the pre-treatment, and they're using maybe groundwater, then I will go with HEDP itself. It reduces the cost a bit. SHMP we are not using anymore because that turns back into phosphate scales. Okay. So we use that, and then we use polymers of acrylic. So we are using terpolymer. Normally we are using uh, uh, sulfonic acid and carboxylic acid together. All right. ये polymer during running time or during cleaning time then? During Running time. running time we are only doing antiscalant or SMBS. Yeah, anti-scalant, SMBS is for reducing ORP. ORP, yes. Okay, but anti-scalant is used for Crystal modifying. crystal modifying and dispersion. Dispersion. Cleaning agents are different. I told you, na, 1, 2, 3, those things are the cleaning agents, and those does not have any terpolymer or phosphonate. Understood? Yes. গুলি যাচ্ছ। আমি সেটাকে বলছি আমার যেটা অ্যান্টিস্কেলান্ট মার্কেট থেকে যেটা আসছে কেমিক্যাল সাপ্লাই হচ্ছে তাদের কি ওই পলিমারটা আছে কি অ্যান্টিস্কেলান্টটা মিক্স হয়ে আছে হবে নিশ্চয়ই। যদি আমি if it is working, then it will be having. ওকে Okay, if it is not working, then it may not be having. If you're not getting any scale in your system, what you can do is you can send me your river water data, okay, and I will run a progression and show you if your system is going to have scale or not. How many stages you have got in your RO? 2 stage. 2 stage, na? Then Yes, sir. then with that river water, I think second stage should get scaling. So if you're not getting any scales, that means your RO anti-scalant is working and it is having these two. Okay. Another thing is that you take a beaker of water, okay. Okay. Now how much recovery you are having? 75%. Recovery is 70%. 60, 70%. 60, 70%. So you add that much of ppm of anti-scalant into the water in a beaker, okay. Okay. So if you are adding, you take 1 liter water, okay, RO feed water 1 liter, then add 3 or 5 ppm whatever anti-scalant you're dosing, add that ppm into it, and then boil it up to boil it where 70% is getting evaporated. Up to 300 Just ml. and just check if any scale formation is happening or not. Okay. Glass surface. On surface Yes, of glass. surface of glass. All right. Okay. Okay. Now coming to your question of difference between BWRO membranes and SWRO membranes. BWRO membranes are brackish water RO membranes where the polyamide layer is actually very thin.
Now to explain you this, troubleshoot RO. Okay. I have to take you through the RO structure, right? Yeah. Here you watch a video. Let me see if you first watch this video and then we'll discuss. Dow, a global supplier of advanced purification and separation technology, offers a Sorry, we came into ultrafiltration. This is the video. How does RO work? The St. Mary's Water Recycling Plant uses reverse osmosis to further treat wastewater after the ultrafiltration process. Reverse osmosis membranes are constructed from a membrane flat sheet. It is comprised of 3 layers: a polyester fabric support base, a microporous polysulfone layer, and a 0.2 micron thick polyamide barrier layer. Here, the polyamide barrier layer, 0.2 micron thick, which you won't be able to see through your naked eyes. Okay, that makes the difference between BWRO and SWRO. SWRO, these polyamide layers are 0.5 microns, whereas BWRO, it is 0.2 microns. Number one. Number two is that both of them, their polysulfone layer is also in SWRO, this is thicker, and in BWRO, B means brackish, S means C, right? So brackish water RO can take up to 10,000 TDS. Brackish water RO can take up to 10,000 TDS. Okay. Okay. But pore size will be same. Pore size will remain same. 0.2 micron thick polyamide SWRO, 0.5 micron. BWRO can take up to 10,000 ppm TDS, while SWRO can take up to 50K. Now there are new age membranes. Okay, CCRO can take 2 lakhs ppm TDS. All right. Is this okay, or you need more information, Aurobindo? Okay. Only the SWRO stable to high TDS. It can resist high pressure. CCRO is also. CCRO is also take up to 2 lakhs ppm. CCRO is closed circuit reverse osmosis. It's a new age, very new technology which has come into the surface. Now The reject CW. zero, sir. Hmm? Reject will be 0, 100% recovery. CCRO. No.
Recovery Yes. will not be 100%. Recovery will be like, okay, recovery wise. Recovery BWRO 70 to 90%. SWRO 45 to 55%. CCRO 80% fixed. Okay. Okay, sir. CW corrosion installation. Okay, it is an ASTM procedure. But is a lagging indicator. What do you mean by lagging indicator? Authentication. Let's say authentication. There are two kind of indicators. One is leading indicators before something happens, and one is lagging indicator after something happens. Okay, so this corrosion coupon method is after something happens. All right, understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the last question: BOD and COD in cooling water. The importance of BOD and COD in cooling water and ETP. ETP, it is having its own norms. Okay. ETP, it is having its own norms. ETP as per norms of CPCB or SPCB, State Pollution Control Board. Okay. For cooling water, less than 30 COD and less than 10 POD in makeup water is good. Otherwise, oxidizing chemical consumption would be high. All right. Yes, sir. So your questions are over. I'm saving your paper. I'll send you back. Okay, sir. Thank you. Okay, I'll send everybody back. Now I'll take Ravi's question. Yeah. Anybody? Sir. Ravi, your questions. I think you got a call from your family in between. No, not family, sir. Mummy, Sir, yeah? Sister, no, actually. sir. Sir also not there. She is my classmate. They are having one group call. Oh. I'm in a meeting. Some high pressure boilers at drum pressure at 90 degrees kg per centimeter square. Drum pH is the range of 9.1 to 9.6, whereas steam pH is 9.0 to 9.6 and sometimes 8.8 to 9.4. Ravi, here are they using ammonia and hydrogen only? Yes, sir. Then ammonia has a partition coefficient of
10:1. Okay. Hmm. For example, you add 11 kg equivalent of ammonia, then 10 parts of ammonia will travel with the steam, and 1 part will remain in the water. And with that, Yes, sir. you are adding TSP also in the drum. Yes, sir. So Yes. TSP also contributes to NaOH and increases the pH, while the Yes, sir. steam is only carrying that Ammonia. 0.9 or 90%, 90% equivalent of ammonia, what you have dosed. Okay, not all the ammonia is volatile. Only Yes, sir. 10 upon 11 is volatile. Okay, that is why you will find steam pH is always slightly lower than drum pH. Even if you keep drum pH at 9.8 also, then also you will find the steam pH is 8.8 to 9.2, or somewhere it is 9.4, because of this partition coefficient. Okay, My because doubt is, I mean to say, sir, hmm, uh, actually, boilers are designed like that. The drum pressure is designed in a such a way 9.1 to 9.6, and the steam pH is designed. Sorry, drum pH is designed 9.1 to 9.6, and the steam pH is designed 8.8 to 9.4, like that. So my doubt is drum temperature, steam temperature is more than drum temperature. Steam temperature is, yes, if it is yes, around. temperature will be more because it is traveling through that radiation zone, na? After drum, Hmm. the Hmm. saturated steam and then superheated steam, they both are Sir. traveling through that condition. Now, for that also, I have some video for you. Mm, My just doubt let is me. steam pH should be designed more than No, drum. no, 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 no. Normally, it's not. Only in your case, it is high because yours is ACC. Okay, yours is air-cooled condenser, and air-cooled condenser, the EPRI guidelines are different. Hmm. I am talking about previous boilers where I have worked. There mostly drum pH design is in such a way 9.1 to 9.6, and the steam starts from 8.8 itself. Exactly, exactly. Normally, this is the normal scenario also. Even here, if you would not have been having this air-cooled condenser, I would not have gone for 4 ppm ammonia. Mm-hmm. You 1 understand now what ppm I'm is enough. saying? Hmm. Yes, sir. So, So 1 to 1. hmm. If I'm having that, I have a doubt here. If I'm having that training BTF workshop application of Six Sigma in power station communication. Just let me check here. This may be having some of it. Let me check if this is what is that video. This is the inside of a boiler furnace. Here, You all go through this video, because this talks about both subcritical and supercritical. You see the paths of the cycle and where what plays an important role,
and then we will discuss a little more on this. Okay? Yes. Yes. Water in the tubes lining the walls of the furnace absorbs heat from burning fuel. The water is boiled, producing steam that drives a turbine and also provides heat for other systems in the plant. Water circulation in a boiler is necessary for two reasons. First, it provides a constant supply of water to be turned into steam. And secondly, it carries the intense heat of the boiler furnace away from the boiler tubes, preventing the overheating and rupturing of the tubes. In a typical drum-type boiler, the water flow path includes an economizer, the boiler drum, downcomers, headers, and the boiler tubes. The water that is supplied to a boiler is called feed water. The first component that the feed water passes through is the economizer. The economizer uses heat from combustion gases that would otherwise flow out of the stack to heat the feed water. Heating the feed water means that less fuel has to be burned in the furnace to convert the water into steam. In this boiler, the heated feed water flows from the economizer and enters the bottom part of the boiler drum through the feed water inlet. The water continually circulates within the boiler through the downcomers, the lower headers, and the boiler tubes. A boiler typically has 2 or more downcomers and 2 or more headers. However, for clarity, this illustration shows only one of each. The lower headers supply water to the bottoms of the boiler tubes. The boiler tubes, which line the inside walls of the boiler furnace, are commonly called water walls. The water walls are exposed to the heat produced by burning fuel. As water flows up through the water walls, heat turns some of the water into steam. The mixture of water and steam rises until it enters the boiler drum, where it's separated into water and steam. The steam rises to the top of the drum, and the water remains in the bottom. The water is then available to recirculate through the boiler. The flow of water through some boilers occurs by means of natural circulation. The key to understanding natural circulation is the fact that cold water is heavier or denser than hot water or steam. In a boiler, the mixture of water and steam in the water walls is hotter than the water flowing from the drum through the downcomers. This is because the water walls are heated by the burning fuel in the boiler furnace. As the mixture of water and steam rises, cooler water from the downcomers flows into the lower headers and then into the water walls. The cooler water is also heated and... Ravi, going back to your question, actually, the pH is lower in steam path is because in the steam path we use T91, T92 and SS grade of materials, whereas boiler is mostly MS. Okay, that is the reason. So But based on the metallurgy, it is based designed. on the metallurgy, yes. But anyway, let us go through this video completely. Okay. rises, creating a self-sustaining flow through the water side of the boiler. Natural circulation of water in a boiler is affected by two factors. They are the amount of heat produced in the boiler furnace and the pressure at which the boiler operates. For example, raising the temperature in the boiler furnace increases natural water circulation because it results in a greater temperature difference between the water walls and the downcomers. Increasing the second factor, pressure, has a negative effect on natural circulation because as pressure increases, the density difference between water and steam decreases. In some boilers, boiler water circulation pumps are used to increase circulation. Circulation that uses pumps is often referred to as controlled circulation. The pumps force the cooler water from the drum through the downcomers, into the lower headers, and up through the water walls. The increase in flow over natural circulation provided by the pumps allows more heat to be absorbed by the water. As a result, controlled circulation boilers can produce more steam for a given size boiler. So all the 600 and above, 600 megawatt and above, 600 is a subcritical boiler, but though it is having BCP, boiler recirculation pump, as you saw, and 660, 700, 800, 1000, all of them are having boiler recirculation pump.
These are very costly pump, and the maintenance is too difficult and very costly maintenance as well. A boiler drum has two main functions. It receives heated feed water to make up for water that's converted to steam and flows out of the boiler. It also collects the steam that's produced in the water walls. This is a simplified cutaway view of a typical boiler drum. The bottom part of the drum contains water to be circulated back through the boiler. The top part of the drum is used to collect steam. Heated feed water is fed into the drum through a distribution pipe. The drum is usually kept about half full of water. In this example, the mixture of water and steam that returns to the drum from the water walls is directed against baffles called drum shrouds that run the length of the drum. The shrouds direct the mixture of water and steam into moisture separators, which are located at the top of the shrouds. The moisture separators separate the water from the steam. The water falls into the lower part of the drum, where it mixes with the feed water. The steam rises into the upper part of the drum. The steam could still have some water mixed in with it, so in this example, it is sent through dryers, which are located in the top of the drum. The dryers remove as much water as possible before the steam leaves the drum. This is important because water that flows out of the drum with the steam could damage downstream components. The steam is discharged from the drum through steam outlet pipes. Between the time that steam leaves the boiler drum and the time that it enters the condenser, it is acted on by components in the steam flow path. To understand what these components do, you need a working knowledge of three basic concepts that are associated with the production and use of steam. They are boiling, saturation temperature, and superheat. Boiling is the process of converting water into steam. For any given pressure, there is a corresponding temperature at which water boils. The temperature at which water will boil at a given pressure is known as its saturation temperature. As pressure increases, saturation temperature also increases. For example, at sea level, atmospheric pressure is 14.7 pounds per square inch. At that pressure, the saturation temperature of water is 212 degrees Fahrenheit. At a pressure of 1,000 pounds per square inch, the saturation temperature of water rises to 545 degrees Fahrenheit. When boiling occurs, as in this water wall, both water and steam are present and at saturation temperature. No matter how much heat is added to the boiler furnace, the temperature in the water walls will never rise above the saturation temperature as long as water is present. However, after all of the water has been removed from the steam, the temperature of the steam can be raised above the saturation temperature. Steam that has been heated above the saturation temperature is called superheated steam. Superheated steam is desirable because higher temperature steam can do more work in the turbine. Additional work from the same amount of steam production makes for a more efficient generating unit. The steam in the drum of a typical drum-type boiler is at its saturation temperature. As the steam leaves this drum, it passes through moisture separators and dryers, which remove water from the steam and thus prepare the steam for superheating. Once the water is removed, the steam is sent to separate sets of boiler tubes called superheaters, where it is heated above its saturation temperature. The superheaters are positioned so that they are exposed to heat from combustion in the boiler furnace or from hot combustion gases. The superheater tubes absorb the heat and transfer it to the steam passing through them. There are several ways of classifying superheaters. For example, a superheater may be classified as a radiant superheater or a convection superheater. A radiant superheater is in a direct line of sight with the flames in the boiler furnace, and it receives most of its heat by radiation from the flame. And that is why the temperature and pressure increases in this zone, Ravi, and the metallurgy is very different. So based on that metallurgy, the temperatures are different. Yes. So metallurgy is different, and it comes directly in the radiation zone. So when it is in the radiation zone, the temperatures are very high. Okay, this is superheater and this is reheaters. Okay, reheater again after working in the HP turbine, some amount of
condensate is taken back, means steam is taken back and reheated. Hmm. That also comes under Hmm. this. So that is put Yes. into IP turbines. And then this is LP turbine. Okay, I'll park Yes. this as of now. I'll take your next question. Should I take your next question? Is okay now, Yeah, yeah, Ravi? you can take. Okay. Yes, sir. You can Where, take the next question. okay. Where copper tubes are there in the condenser, ammonia and feed water is restricted to maximum 0.5, normally maintained at 0.4, so that Yes, steam sir. Less than pH, that. Less than. less than that, 0.4, 0.3, like that. Hmm. So that steam pH is in range of 8.8 to 9.2. In this case, also, I think also is missing here. In this case, also some redness is observed on LP blades of steam turbine. What is the solution? Now, this is not only in a normal power plant, it is also Hmm. uh, in the power plants in paper mills and also in the boilers which are having copper metallurgy in the feed water section. Okay, that we have seen. Actually, cooling water tubes are made Yes, copper tubes. In that uh, also there is a in that condenser. also, yes, yes. And the solution is actually nothing but to actually uh, keep the pH under control. Now in the newer range, you see AVTO is applied over here. Sorry, AVTR is applied here. So if Yes. AVTR is applied here, then also hydrogen is converting into ammonia. Hmm. So the measurement part is actually something which needs to be looked upon, because when I was running the plants in Tata Power, I had all the Sir. units with cupronickel, Mhm. but I was maintaining in such a way so that I get zero point 0.2 to zero point 0.3 ppm ammonia only. Okay, Hmm. and pH also I was maintaining below 9 with in the steam, Yes, sir. 8.8 to 9. Yes, sir. So I was not able Yes, sir. to find any copper in that. But if it is Hmm. observed, then you have to play with the pH only. You have to reduce the ammonia only. Yes, sir. Ammonia. Now, Ammonia only. To protect the copper metallurgy, we take care of yes, this ammonia concentration less than yes, 0.4, 0.3. yes, yes. But what about And this? I'm worried of iron. iron, This means that iron, redness in mm, means na, due to that just redness is observed. See, iron will only come because of the carryover. Your uh, mm, s- lab, your saturated steam pipes or superheated steam pipes will never corrode like that. Okay, mm, even with 8.8 pH, I consider mm, 8.8 pH. Okay, with 8.8 pH also, the iron will not come out of these two. It would be actually getting carried over from the main steam, from the drum. It would be getting carried over from the drum. You have to check the drum internals here in this case, because this is as question this is kind of this is not a normal carryover. Like there is a volatile carryover always. Like silica is a volatile carryover. Sodium is also a little volatile carryover. But chloride and iron are actually mechanical carryover. Okay, oh, you have to check the mechanical carryover. Like you have the NMAS boiler in your plant. The NMAS boilers have more of mechanical carryover than the actual carryover. That is why you are seeing 3% and 4% carryover in the from the steam to from the drum to steam, which BHEL boilers we do not see. Okay, the drum internals has to be seen, because of that redness will not be there because of that 8.8 pH. Even if you go for 8.5 pH, EPRI has given us 8.5 pH for EVTO. 8.5 to 8.5 to 9.
wastewater. No, in AVT, in OT, it is 8.5. In oxygenated treatment, it is 8.5 straight away, 8 to 8.5. So, in that case also, we do not see redness. Okay. That redness is due to mechanical carryover. Yes, the redness is due to the mechanical carryover of the drum. So, drum internals has to be seen, checked properly. And then iron in saturated stream versus iron in drum needs to be checked. It should be total iron. We need to check the total iron in the saturated stream and divide that by total iron in the drum. Then you will come to know about the mechanical carryover percentage. Now, what is the? Should I go to the third question? Yes, sir. You can go, sir. Okay. Solution for algae growth in open reservoirs. Straight away Normal saying there is no solution. Okay. And the solutions which are available are costlier, but they are being employed. If you go to Indonesia, the conditions are very conducive for any vegetation to grow. Okay. So what they are doing to stop this algae growth in their reservoirs or in their this thing, they use membrane pouches, huge membrane pouches. Means you can say that can be a kind of very large bag, like a reservoir is contained in a very large bag. Okay, maybe if 1000 meter cube kind of huge bag is built, and in that bag they put the clarified water. Okay. Means below that they No, cover. it's like, you remember we used to have air pillows when we used to travel in train in our early days. Yes, That kind of bag. So in Indonesia, most of the plants are using that large, huge bag. In that, maybe an army of 1 lakh people can go inside. That kind of huge bag. Okay, that kind of capacity bag is used. Another solution. There are three solutions in total. Another solution is, there are now hexagonal plastic rigid PVC trays. Okay, hexagonal rigid PVC trays which are floated on the surface of water, which actually covers the complete surface so that the sunlight cannot go inside. Okay, rigid PVC is not letting the sunlight pass through that plate. Okay, and if you cut off the sunlight, algae growth will be restricted. Okay, third but not very useful is having floating solar PV. Floating solar PV. Solar PV. Floating. Solar panels. They generate power. Yes, that kind of thing. Yes, sir. Okay, It's and a then common. most common I've seen in India is PVC, hexagonal PVC, rigid PVC things which are put to stop the evaporation, as well as it serves two purposes: stop the evaporation and also stops the algae growth. But I love that Indonesian practice here, because I am the consultant for April Indonesia also, the largest paper mill. That huge bag. You remember that air pillow
Rizwan, you may have also used air pillow while traveling. No, sir, I didn't use ever. Okay. I don't know Okay. about Then I the have to air find out a pillows. picture and send you. Yeah. Actually, Okay, sir. we are much more elder than you, Rizwan. So we remember that time. Now the train themselves gives pillows, so we don't. Plus, Anyway, we do not travel in third AC anymore, so we do not know. Right. So now that rigid PVC thing is not much costlier. Okay, and it actually covers the complete area. But where the air, the ambient air flow is very high, na, the place like Rajasthan and all, where there is a sandstorm or something, some storm kind of thing can go. This rigid PVC thing does not work. Okay, but I seriously tell you, I like that. I'll put a picture in the group also. Okay, I'll send it to Rizwan also. Uh, Rizwan is not there in the group, so I'll send him separately. So Okay, sir. normally these are very large membrane pouches. Okay, made of a plastic layer inside, and above it is cloth. Okay, a cloth bag which is lined by rubber or plastic from inside. Okay, normally rubber lining is better. So if it is rubber lined completely and it is so large that at least 1 lakh people can enter into it, so you can imagine what kind of system it would be. And most of the based Indonesian on companies are using that. the best in India, can we get that back, sir? Based on Yes, yes. small reservoir Why size, not? Why not? like our plant. Why not? Your reservoir size is very easy. We can develop it in India. Mm. I should be the pioneer in that then. I will develop it. I will develop it for you. Will propose that. Yeah. And then is it is it advisable to maintain higher pH in DM tanks by dosing pH booster as pure DM water or as pure? No, it is not advisable to dose anything in DM tanks or CSTs. Okay, because In some plants, it is in design itself. One morpholine pump, dosing because tank, such kind because of things because given. those are poor fellows who are just doing copy paste of the 5 megawatt 10 megawatt plants. Uh, Okay, where the water yes. goes into the deaerator, whereas in a good power plant the water is fed into the hot well. मतलब, in that exhaust hood, it is sprayed in the exhaust Mm. hood, and that exhaust hood vent becomes the first deaeration system. Okay, Yes. because Yes. the CO2 gets removed from there, and also this ammonia or other volatile pH booster can also be let out from there. So Mm. it is not advisable to maintain higher pH in DM tanks or CSTs. Many companies, even 250 megawatt unit, I've also seen, have made them a change. I told them Mm. simple. Actually, they normally need a reference. I see, go to any NTPC plant and show me if they are doing. So you continue. If they are not doing, then you have to discontinue. So they then go In smaller ask. plants, mostly given, sir. Yes, In it is. It smaller is plants like 30 especially megawatt, 40 especially megawatt in plants. you will find this especially in cement plants here. Yes, sir. Cement plants and captive power plants, like small Yes, plants. yes. Now most of I the have seen. captive power plants are stopping because the outside power cost is becoming cheaper than their captive power plant cost. But cement plants will continue using because they need ash also. Yes, sir. Mm. So for So smaller boilers also, like no, below 100 kg. see,
It See is the not advisable. see if the boiler is the boiler water means boiler makeup water into the boiler is going through deaerator. Okay, you may continue adding, but it is never a good practice. It is not there in any of the standard, not in NTPC standards or not in EPRI, not in our this what do you call Yes, sir. VGB standards. It's not there anywhere. So EPRI Condenser standard is is the there. best to follow. If condenser is there, it should enter into the hot well. If Yes, air and cooled condenser is there, morpholin anyways shall not be dosed at any place because it breaks down into acetates and formates. Morpholin always breaks down into acetates and formates, and that becomes acetic acid and formic acid. So it's better to avoid that. If you remember any plant using morpholin, the turbine would be found reddish in color. already so much deposition was there where I have seen. Okay. Here morpholin was used. Ah. All right. Clean. Ah. Yes, sir. Any other question, Ravi? That's all, sir. Yeah. Then we'll go to Venkat Krishnan. You asked a question when I was talking about the second point. Yes, sir. Yeah. Can I ask, sir? Yes, please. सर now the STP सिस्टम में अब हम लोग जो COD BOD जो चेक करते हैं ना सर, हाँ, तो अभी उसका ट्रीटेड वाटर में ज्यादा COD मिल रहा है सर, COD BOD, तो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं सर? ट्रीटेड वाटर में ज्यादा COD BOD मिल रहा है? यस सर. STP वाटर में? हाँ, STP आउटलेट सर. तो ट्राई हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सर? ट्राई हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन डाइऑक्साइड. हाँ. सर उसका एडिशन कितना? सर? H2O2 0.1%. H2O2 1%. 0.1%. STP Sir, if वाटर not में available, तो then what to do, sir? STP वाटर में ट्रीटमेंट क्या है तुम्हारे पास? What is the treatment facility you are having? YTPS में ना? हाँ सर, एरिएशन प्रोसेस में है सर हम लोग इधर. एरेशन मींस एरोबिक एरेशन की एनारोबिक? एरोबिक सर. अच्छा, एरोबिक. तो उसमें इनलेट में कम रहता है, आउटलेट में ज्यादा हो जाता है, ये बोलना चाहते हैं आप? नहीं सर, इनलेट में जो हेवी है वो तो है. आउटलेट में एज पर नाम से हम लोग को जरा जितना लेस देन 10 रहना चाहिए ना सर, लेस देन 50 ppm होना चाहिए. अभी अराउंड हम लोग को 70 to 80 तक मिल रहा है सर अभी. तो मतलब इट इज नॉट ऑपोजिट ना कि इनलेट से आउटलेट ज्यादा आ रहा है. इट इज नॉट लाइक दैट ना. तो आउटलेट का जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. यस सर. है ना. तो इसके लिए दो चीज करना पड़ेगा. एक, आपको एरेशन टैंक का कलर क्या है ये बताइए. एरेशन टैंक के अंदर जो पानी है उसका कलर क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ दैट वाटर? ब्राउनिश, लाइट व्हाइट एंड ब्राउनिश टाइप का आता है सर. लाइट ब्राउन. यस सर. ओके. स्मेल कैसा आ रहा है? नॉर्मल सर, अगर ज्यादा हेवी स्मेल तो कुछ नहीं है सर, नॉर्मल स्मेल आता है सर. ओके. कॉफी कलर चाहिए मेरे को उसमें. कॉफी कलर सर. हाँ, तभी उसके अंदर जो है वो अच्छा होगा. तो उसके लिए काउडंग और जैगरी यूज करना पड़ेगा 30 डेज के लिए. सर वो इनिशियल हम लोग सीओडी उसमें मेंटेन किया था. हाँ सर, वो करके हम लोग सीओडी मेंटेन करके उसके बाद ही हम लोग प्रोडक्शन चालू किया सर. हाँ, तो अभी क्या होता है, ये एक्चुअल में एसटीपी में ना, हाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सडनली सुबह एक बार जोर से आएगा पानी, फिर शाम को एक बार जोर से आएगा. ठीक है. तो ये जो बैक्टीरिया के लिए जो फूड है ना,
एक हाँ बार सर। ज्यादा आएगा, एक बार कम आएगा, फिर एक बार ज्यादा आएगा, एक बार फिर कम आएगा। तो उस कारण से बैक्टीरिया पॉपुलेशन जो है मेंटेन नहीं हो पाता है। टू मेंटेन दैट बैक्टीरिया पॉपुलेशन हमको कंटिन्यूसली उसमें यूरिया डीएपी डालना पड़ता है, और उसके अलावा काउडंग जो है एवरी मंथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें डालना पड़ता है। और यदि ओके आपको सर। केमिस्ट्री कंट्रोल चाहिए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के लैब में टेस्ट करो हाँ सर। कितने से कितना कम आ रहा है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड उनसे मांगो। आरटीपीएस तो ऐसे में भी पूरा कंगाल हो चुका है, पैसा नहीं है उसके पास। देगा तो अच्छा है, नहीं देगा तो जैसा चलेगा वो बंद नहीं होगा। लेकिन हाँ, हाँ सर, वो डोंट वरी, एमपीपीएस बंद में नहीं सर होगा। डीओ कितना मेंटेन करना है सर? डीओ आपको 2 to 3 ppm मेंटेन करना है। 2 to 3 ppm सर। हाँ, कितना अच्छा। मेंटेन हो रहा है? सर अभी वही 2 पॉइंट तक कैसे मेंटेन हो रहा है सर अभी फिलहाल तो? हाँ, 2 to 3 ppm मेंटेन करना है। तो 2.5 2.7 2.7 बहुत ऑप्टिमम है। हाँ सर। डीओ मेंटेन नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा एक कंप्रेसर लगा के एयर नीचे से डालो, पाइप पे पत्थर बांध के पाइप को नीचे डालो और उसके नीचे से एयर डालो। सर एयर ब्लोइंग सिस्टम अवेलेबल है सर यहाँ पे ऑलरेडी? डिफ्यूज्ड एयर सिस्टम है अवेलेबल। चोक तो नहीं हाँ हो सर। गया ना? सर चोक तो कहीं नहीं हुआ ना? नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं नहीं। तो फिर ये जो अभी जो टेम्परेचर चल रहा है ना, हाँ सर। एट दिस ये टेम्परेचर में आपका ऑक्सीजन पानी में मिक्स नहीं होगा। ओके ओके सर। ठीक है, ठंड के टाइम पे मिक्स होगा पानी में। नहीं एक्चुअली जितना हम लोग का ज्यादा रनिंग आवर्स भी है ना सर, मॉर्निंग 6 to 7 करेंगे और तरह इवनिंग भी हम लोग 6 to 7 इसी टाइम पे करेंगे सर। वो बीच में हम लोग उसको चलाएंगे भी नहीं। हाँ वो ठीक है, क्योंकि दोपहर को बिल्कुल खराब हो जाएगा हाँ सर, दोपहर। एक्चुअली उतना क्वांटिटी लेकिन नहीं है ना सर, इसीलिए हम लोग का रनिंग आवर्स भी बहुत कम है उसका। एरेशन लेकिन चलते देना है। हाँ, और एरिएशन तो कंटिन्यू रहेगा सर 24 आवर्स। और यूरिया डीएपी नहीं सर, वो रेगुलर नहीं है सर। इनिशियली जब सीओडी में हम लोग को जो स्टेबल करना नहीं रे रहता है बाबा, तभी हम वो कंटिन्यूस चाहिए। एनकेपी है ना, यूरिया डीएपी दोनों कंटिन्यूस चाहिए। कंटिन्यूस गोल चाहिए सर। हाँ, उसको डिसॉल्व करके ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना है उसके अंदर। सर मतलब किस कैसे सर, मतलब पीपीएम पे के परसेंटेज कैसे डोज करना है सर उसको? वो पीपीएम वो एक्चुअल में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है उसको। मतलब ओईएम से कितना पूछो परसेंट ना, सैचुरेशन बनाना है सर जो उसपे? जो डिजाइन किया उससे पूछना पड़ेगा, या फिर मेरे को आके पूरा मेजरमेंट करके करना पड़ेगा। अच्छा, तब ऐसे डायरेक्ट अभी ऐसे हम कुछ परसेंटेज बेस पे हम नहीं कर सकते हैं सर उसको? मेरे को तुम साइज भेज दो एरेशन टैंक का, ठीक है? ओके सर। वाटर फ्लो भेजो, इनलेट सीओडी बीओडी भेजो, और एरेशन टैंक का साइज भेजो, और ऑक्सीजन पर आवर लिख लो। हाँ सर, बोलिए सर। इनलेट बीओडी सीओडी हाँ फ्लो ओके सर। फ्लो ओके ठीक सर। है? एरेशन टैंक का ऑक्सीजन मतलब कितना कितना एयर एयर जा रहा है क्वांटिटी पर फ्लो, आवर। हाँ, एयर एयर फ्लो। क्वांटिटी। हाँ हाँ, सर। एमएलएसएस एमएलबीएसएस ओके सर। ये भेज दो, और एक फोटो खींच के भेजो क्या कलर है। अच्छा ठीक ठीक है? है सर, मैं भेजता हूँ सर। हाँ, आप लोग को तो स्लज एज वगैरह मालूम नहीं होगा, तो अभी सर उसके लिए अलग से ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपको। स्लज कौन सा एज सर? स्लर। स्लज एज होता है, एक स्लज एज, एक हाँ ऑप्टिमम सर। स्लज एज में ही वो काम करता है। उसके ऊपर स्लज एज हो गया तो काम नहीं करता है, उसके नीचे स्लज एज होता है तो काम नहीं करता है। ओके सर। वो काउडंग यूरिया डीएपी सबसे अच्छा है और यूज हो जाता है, ठीक रहता है। ओके सर। सर अभी और हमारा इधर कूलिंग टावर में वो हम्म, नोजल से फ्रीक्वेंटली चोकिंग हो रहा है सर। मतलब कुछ वाओ, मेटल्स भी फाउंडिंग हो रहा है, फाउंड हो रहा है सर उसमें। क्या 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 फाउंड हो रहा है? मेटल सर, सम मेटल। आ, तुम्हारे पास है उसका वो मतलब मेटल पीस है सामने या फोटो है? नहीं है सर, अभी फिलहाल तो नहीं है सर अभी। मेटल पीस कैसा दिखने में है? मतलब राउंड शेप में आ रहा है कि पीस आयरन का पीस आ रहा है? नहीं, आयरन के पीस जैसे निकल के आते हैं सर, ऐसे कोई शेप वैसे फिक्स नहीं है सर, जैसे नॉर्मली जैसे मिलता है ऐसे ही।
कलर ब्लैकिश आ रहा है, रेडिश आ रहा है? कलर जस्ट मिक्स है सर, वैसे कुछ ऐसे ही मतलब नहीं। आप लोग आइसोथायोजुलिन डाल रहे हैं सिस्टम में? सर एनओबी क्या डाल रहे हैं? डाल रहे हैं सर, अब ऐसा होता है। हाँ, तो वो सही नहीं है। आपको तो सर ऐसे में ओजोनाइजेशन तो हो नहीं रहा है, ओजोनाइजर नहीं हो आपका रहा है चल सर, नहीं रहा है, नहीं आपको चल रहा है सर। ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड के नाम पे कुछ मिल नहीं रहा है, और जो एनओबी डाल रहे हो वो भी काम नहीं कर रहा है। तो एनओबी भी इज एन आई वॉश आप लोग के लिए। जो एनओबी मिल रहा है आप लोग ना, हाँ उससे सर, भी खरीद रहे हो आप अभी। आप पूजा केमिकल से खरीद रहे हो कि क्लीन फ्लो से खरीद रहे हो? जिससे भी खरीद रहे हो, क्लीन फ्लो सर। हाँ, वो एनओबी सही नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग, एनओबी खराब है। ओके सर। अंदर आपको गैलेनुला मतलब एमआईसी हो रहा है, सर अभी उसको माइक्रोबायोलॉजिकली कैसे इंड्यूस्ड करोजन। चेक कर सकते हैं सर उसको? वो जो पीस है उसको निकाल के उसको हाँ सर। स्मेल करो, उसमें तुमको रोटन एग स्मेल आएगा, और वो ओके सर, ब्लैकिश होगा अंदर। वो उसको तोड़ोगे तो ब्लैकिश होगा अंदर वो ब्लैकिश एंड पीस। एगिश स्मेल आएगा सर। ओके। हाँ, हाँ, ओके सर, मैं चेक करके आपको मैं पर्सनली मैसेज करूंगा सर उसके लिए। ठीक है। और ओके सर। और सर अभी कूलिंग टावर ट्रीटमेंट में अभी हम लोग हम्म, को जो रॉ वाटर कंडक्टिविटी अराउंड अभी 1700 आ रहा है। ओ बाप रे, कौन से रिवर का पानी है भाई? यही सर, ये कृष्णा रिवर है सर, इधर जो बॉर्डर में है कृष्णा रिवर। यही यही पानी अभी वहां पर आने वाला है क्या? ये 1700 आ रहा है, तो तुम तो 1 COC से ऊपर ही नहीं जा पाएगा यार। सर वही है सर, अभी वो है। यही मेरा क्वेश्चन है सर कि अभी बीटीपीएस का भी अलग है सर अभी इधर। नहीं, बीटीपीएस तो कह रहे उसको तो वो तुंगभद्रा रिवर का पानी मिल रहा है ना हाँ सर। अभी। अभी उसको कृष्णा रिवर नहीं मिलेगा। हम्म। और तुम्हारा पानी तो अभी ग्रीनिश भी आ रहा है बहुत। मैं अभी नॉर्मल है आरटीपीएस में सर, कोई देखा तो ग्रीनिश पूरा, नहीं है सर, नॉर्मल कलरलेस ही आ रहा है सर। लेकिन आरटीपीएस में तो ग्रीनिश आ रहा है पूरा। नहीं सर, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है सर, इधर तो नॉर्मल आ रहा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो हार्डनेस, हार्डनेस अभी 300 आ रहा है सर अभी हम लोग को। तो ये जो ट्रीटमेंट है चेंज करना पड़ेगा। ये जो ट्रीटमेंट आपका है ना, हाँ एचएसपी सर। का और एंटीस्केलेंट का, हाँ सर। एचएसपी और एंटीस्केलेंट का ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। फिर से आपको कंडेंसर के ट्यूब में फिर से डिपॉजिट होगा, और फिल्स में भी फिर से डिपॉजिट होगा। टू सीओसी से तो ऊपर जा ही नहीं सकते तुम एनी केस। सर इससे अभी ये क्यों होगा सर अभी ट्रीटमेंट? हाँ, क्या? सर ऐसे क्यों होगा सर, मतलब पूछ रहा हूँ, ऐसे मतलब ऐसे डिस्टर्ब क्यों होगा? ये, अरे इसका तो मैंने बताया ना, आपका कंसंट्रेशन जैसे आपका ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सर। तो आपका जो है पानी में स्केल फॉर्मिंग टेंडेंसी बढ़ेगा। आरएसआई कितना है? 6.8 आ रहा है सर। कैसे होगा ये 6.8? एसिड डाल रहा है क्या? हाँ एसिड दे रहे हैं ना सर, सल्फ्यूरिक कितना एसिड कंटिन्यू हो रहा है सर। कितना जा रहा है, कितना हो रहा है? सर अभी 8.2 पीएच तक अभी मेंटेन कर रहे हैं सर उसमें। नहीं तो 8.2 पीएच में भी काम नहीं होगा यार। तुम आरएसआई कैलकुलेशन ठीक से देखो। एलएसआई कितना आ रहा है? एलएसआई 0.8 आ रहा है सर, और आरएसआई पे 6.8 आ रहा है सर। तो ये कैसे हो सकता है? एलएसआई स्केल फॉर्मिंग है और आरएसआई ये है तुम्हारा करोजन है। वही मेरा डाउट है सर, आस्किंग नहीं, सर। शुभानी से बात करवाना मेरे को कल। अच्छा ठीक है सर, मैं एक बार बात कराता हूँ सर। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में एरर है। सर। एनीवे मैं ये कैलकुलेटर भेजूंगा ना, एक्सेल शीट, हाँ इसमें सर। कैलकुलेट करके देखना। ओके सर। क्योंकि कभी भी ऐसा होता नहीं है, यदि एलएसआई स्केल फॉर्मिंग है तो आरएसआई भी स्केल फॉर्मिंग नहीं ही आता नॉर्मली है। जो अभी एलएसआर से कैलकुलेटर में जब चेक कर रहे हैं उसी से कर रहे हैं सर, अभी ये फॉर्म ये आ रहा है सर रिजल्ट।
और कोई कुछ डिपॉजिट नहीं हो रहा क्या आपका कहीं फिल्स में वगैरह? नहीं सर, कोई डिपॉजिट नहीं दिख रहा है सर। ओके, ठीक है। और सर अभी लॉन्ग शटडाउन में, अभी कूलिंग टावर में अभी पैसिवेशन लेयर रिकमेंडेड है क्या सर? नहीं है नहीं है सर। ना। तो उस टाइम में अभी हम लोग को क्या, अभी जैसे पीएच क्या कुछ मेंटेन करना पड़ता है सर? एटलीस्ट अगर पैसिवेशन लेयर जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ नहीं मेंटेन करना है, सब सब ड्रेन कर देना है, ड्राई आउट कर देना है। ठीक है सर, जब प्लांट ट्रिप होता है उस टाइम हम लोग को डोजिंग कब बंद करना है सर? अभी जो सर्कुलेशन में है, अभी कूलिंग टावर सर्कुलेशन, अभी किसी भी रीजन में सिक्स प्लांट ट्रिप सिक्स होता है 6 आवर्स बाद। तो मतलब वैसे कुछ फिक्स है क्या सर 6 आवर्स बोल के? हाँ, 6 आवर्स फिक्स है, क्योंकि कंडेंसर को कूल होने में 6 आवर्स लगते हैं। ओके सर, मतलब उस टाइम एसिड भी उसके पैरेलली रखना पड़ेगा सर? हाँ हाँ, रखना पड़ेगा। ओके सर। और Based सर on your ये pH, अभी acid based on your pH measure करके। हाँ ओके ओके, वो तो वही पीएच मेंटेन करेंगे। और सर ये एमबी एमबी में हम लोग को तो न्यूट्रल पीएच मिलना चाहिए ना सर? अभी अराउंड 6.1 नहीं मिलता, न्यूट्रल किसी को नहीं मिलता है। हाँ सर, वही अभी सबको एसबीए सबको इवन सबको मतलब प्रीवियस में 6.5, सबको एसबीए में भी सेम 5.5 प्रॉब्लम। से 6.5 मिलता है सबको। सर उसके लिए कोई रीजन है क्या सर? बाइकार्बोनेट का जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हाँ वो सर। इवन 5 ppm भी रुक जाता है, वो रिमूव नहीं होता है पूरा, वो कार्बोनिक एसिड अंदर रह जाता है थोड़ा सा। तो उसकी वजह से पीएच ड्रॉप होता है सर? हाँ, उसकी वजह से पीएच ड्रॉप होता है। उसके बाद आपका पीएच इंक्रीज करने का कोई उसमें रहता नहीं है। नॉर्मली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एनहांस रह जाएगा, जो हाइड्रोजन के साथ मिलके उसका एसिडिक फॉर्म बनाएगा। थोड़ा बहुत एनायन भी 2 ppb 5 ppb एनायंस भी रह गया तो वो हाइड्रोजन के साथ मिलके उसका एसिड्स बनाएगा। तो कहीं पर भी 7 pH नहीं आता जब तक आप MB में 30-70 रेशियो नहीं रखो, 30 कैटायन 70 एनायन। MB में यदि आप 30 कैटायन 70 एनायन रखते हो तभी हाँ आपको सर। pH 7.1 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सर लेकिन ऐसे डिजाइन में तो हम लोग को जो रेकमेंड नहीं करते हैं ना नहीं सर? होता है, नहीं तो वो नहीं लोग, कोई नहीं करता वो, और हाँ कोई सर। नहीं करता, और एक्चुअल में हर एक को 6.5 से नीचे मिलता है। हाँ वही वही, इसीलिए सर यही डाउट है सर अभी, क्योंकि जब हर एक को, इनिशियली जब रेकमेंड करते हैं वो लोग तो 50-50 रेशियो हाँ तो मोस्टली रेकमेंड वो करते हैं। वो बोलना अलग बात है, डिजाइन करने के टाइम पे अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी को नहीं मिलता है ये। हाँ सर। मतलब मैंने आज तक इंडिया में एक भी प्लांट नहीं देखा जिसको मिल जाता है। 6.5 भी मिल गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है सर। और सर अभी वो कोलोइडल सिलिका हाई टेम्परेचर में जो रिएक्टिव सिलिका में कन्वर्ट होता है, हाँ, वो कौन सा टेम्परेचर में कन्वर्ट होता है सर? मतलब कुछ स्टार्टिंग पॉइंट? 270 टू 270 270? सॉरी सॉरी सॉरी, 270 में हाइड्रोजन का डिसोसिएशन होता है। ये 108 से चालू होता है और 180 में खत्म होता है। 108 से लेके 180 तक? हाँ, अच्छा, इसके लिए से कुछ मतलब ये इतना टेम्परेचर में क्यों होगा, कैसे कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ है क्या सर उसके लिए? हाँ वो बुक्स में है एक्सप्लेनेशन इसका। बुक्स अच्छा, वो बुक में। बुक्स में से, हाँ बुक्स में से फोटो निकल के देना पड़ेगा आपको मुझे। अच्छा, ठीक है सर। बुक्स में एक्सप्लेनेशन है ये। आप यदि डेग्रा माउंट की बुक उठा लोगे, डेग्रा माउंट की बुक में एक्सप्लेन्ड है, और एक बुक में, और एक कोई बुक में है, एक मिनट याद करने दो कौन सी बुक में है। आपके बुक में है सर, वो वाला बुक में? नहीं, मेरे बुक में नहीं लिखा मैंने ये। नहीं, एक और बुक में, रुको ना मुझे याद करने दो। डेग्रा माउंट की बुक में देखा मैंने, और एक बुक इंडिया में वो केमाउंट के साथ आया था एक कंपनी, उसका बुक था, याद आएगा। केमाउंट के साथ एक कंपनी मिलके आया था, लेकिन बाद में इंडिया से चला गया वो।
उसके हाँ सर, पास था वो, उसके बुक एटलीस्ट में था। उसका फोटो हाँ मिल सॉरी सॉरी, पाएगा। जेम्स डब्ल्यू मैकॉय, जेम्स डब्ल्यू मैकॉय की बुक में है, जेम्स डब्ल्यू मैकॉय का कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट। तो सर वो क्या अभी वो पेज मिल पाएगा सर मुझे? पेज भी मिल जाएगा, बुक भी मिल जाएगा, मैं एक लिंक दूंगा, उसमें बहुत सारे बुक्स हैं, वो बुक्स भी मिल जाएंगे। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन और सर। हम्म सर अभी आरओ या एमएफ माइक्रो फिल्ट्रेशन जो भी ये जो भी है, जो भी हम लोग सीआईपी करते हैं, अभी हम्म सीआईपी टू सीआईपी सेल्फ लाइफ कितना डिस्टर्ब होगा सर मेम्ब्रेन्स का? यदि आप पीएच हाई नहीं जा रहे हो तो सेल्फ लाइफ विल बी डिस्टर्बिंग बाय 0.001%। यदि पीएच अबव 10 जा रहे हो, अबव 10.2, तो आप 0.1% लाइफ डिस्टर्ब करोगे उसका। तो बेसिकली कितना लाइफ रहता है सर उसका, मेम्ब्रेन वगैरह इस सब का? 10.2 से ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि ग्लू लाइन खुल जाता है। सर ग्लू सर लाइन होता है ना मेम्ब्रेन का, हाँ ग्लू लाइनिंग होता है मेम्ब्रेन में, वो ओके सर। मेम्ब्रेन का ग्लू लाइन खुल जाता है, मतलब ग्लू। आप, हाँ, ग्लू लाइन होता है, मतलब ओके चिपकाते ओके हैं सर। मेम्ब्रेन को, वो हाँ मेम्ब्रेन सर। चिपकना निकल जाता है, ओके, उसीलिए मतलब हाँ सब कुछ, मेम्ब्रेन सेम है मतलब सर जब अभी? जब जब मेम्ब्रेन का एंड लाइफ आता है तो 10.5 तक जाते हैं हम लोग पीएच। पीएच, अच्छा। हाँ 10.5 11 तक जाते हैं, एंड लाइफ आता है तो वो हम लोग को समझ में आ जाता है कि एंड लाइफ आ रहा है, तो तब जाते हैं, मतलब 5th ईयर 6th ईयर ऐसा। नहीं इसलिए ऐसे कुछ मेम्ब्रेन का सेल्फ लाइफ भी होता है सर कि इतने इयर्स के बाद उसको रिप्लेस करना है, ऐसे कुछ? उसके उसके डेटा शीट में लिखा रहता है, सर ओईएम का रिकमेंडेशन में लिखा रहता नहीं है, ऐसे कुछ रिकमेंड होता है। ओईएम से पूछोगे तो ओईएम टोरे मेम्ब्रेन में 3 इयर्स लिखता है, जी का लो फॉलिंग मेम्ब्रेन से 5 इयर्स लिखता है, ये लोग लिखता है क्लियरली। अच्छा आरओ का अभी जैसा डव मेम्ब्रेन रहता है सर आरओ का, उसका कितना डाउ सेल्फ में लाइफ रहता है सर? 5 इयर्स, 5 इयर्स सर। डाउ का एचआरएलई में 5 इयर्स, डाउ में भी तो That much बहुत मेम्ब्रेन warranty, सॉरी वारंटी supplier, नहीं that much रहता है, warranty. वारंटी नहीं रहता है, एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखा रहता है, Only. वारंटी कोई नहीं Hardly देता है, 1 year. वारंटी कोई नहीं देता है, क्योंकि दे आर नॉट रनिंग द प्लांट ना, दैट इज व्हाई नोबडी इज गिविंग वारंटी, दे आर जस्ट गिविंग अ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट्स ऑल। That's all. हम्म ओके सर। अभी सर ये फ्लो एक्सेलरेटेड करोजिन, अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं सर बॉयलर में? ऑक्सीजनेटेड ट्रीटमेंट डाल के, एवीटी वो एवीटीओ नहीं, ओटी, ओटी है सर, ये ओटी ट्रीटमेंट, ओके सर। ओटी या फिर इसको सीडब्ल्यूटी भी बोलते हैं, कंबाइंड वाटर ट्रीटमेंट। ओके सर। सर और ये एक्सफोलिएशन क्या है सर बॉयलर में, उसको अभी कैसे अवॉइड कर सकते हैं सर? वो सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स में ज्यादा देखा जाता है। क्या हाँ होता सर। है, जो जो सुपर हीटेड ट्यूब्स होते हैं हाँ और सर। जो रीहीटेड ट्यूब्स होते हैं, उसमें जो है ना अंदर एक फॉर्मेशन होता है आपका, एक मतलब आप समझो मैग्नेटाइट या हेमेटाइट लेयर का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब जो यूनिट फ्रीक्वेंट शटडाउन या शट शट मतलब स्टार्टअप में जाता है फ्रीक्वेंट, उसमें क्या होता है शुरू में, जब हम नीचे उसको आग आग लगाते हैं ना, मतलब जब फ्यूल बर्न करते हैं, तब तक में जो स्टीम जो है वो आपका रीहीटर में, सुपर हीटर में वगैरह नहीं पहुंचता है, लेकिन आग का जो हीट है वो पहुंच जाता है। तो वो क्या करता है, उसके अंदर जो भी मतलब आपका करोजन इनहिबिशन लेयर बना होता है, कोई भी हेमेटाइट मैग्नेटाइट जो भी लेयर बना होता है, उसको तुरंत क्रैक कर देता है ड्यू टू एक्सपेंशन। वो क्रैक कर देता है तो वो इकट्ठा होके किसी बेंड में जाके
अटक जाता है। जब वो इकट्ठा होकर किसी बेंड में जाकर अटक जाता है तो उस टाइम पे कौन चला गया? ओके, ठीक है। तो वो किसी बेंड में जाके जो है अटक जाता है और वो एक्सफोलिएटेड मटेरियल रहता है। तो एक्सफोलिएशन वो होता है कि जब ये ड्यू टू अंदर जो है ट्यूब के अंदर स्टीम या उसको हम लोग कूलेंट बोलते हैं, कूलेंट का ट्रेवल नहीं है, लेकिन बाहर से टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि हमने स्टार्टअप किया है। तो जो यूनिट फ्रीक्वेंट स्टार्टअप करते हैं या फ्रीक्वेंट साइकिलिंग लोड बोलते हैं, साइक्लिक लोड करते हैं, उसमें ये चीज बहुत बार होता है कि अंदर कूलेंट का फ्लो कम होता है या फिर कूलेंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन बाहर का मेटल टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। मेटल टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एक्सपेंड करता है, तो अंदर जो ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन होता है वो ऑक्साइड लेयर टूट जाता है। तो ऑक्साइड लेयर टूट के एक्सफाइल होता है, उसको एक्सफाइलेशन बोलते हैं। सर अभी ओआरपी आप चेक बोले थे ना सर, अरविंद सर जब क्वेश्चन पूछे थे, जब ओआरपी मेंटेन करने के लिए आप बोले थे सर, हाँ। -152 अगर -250 इन इकोनॉमाइजर आउटलेट, अगर अभी सर ओआरपी तो अभी ऑनलाइन में अगर नहीं रहेगा तो उसके लिए अभी अल्टरनेट क्या है सर उसके लिए? उसके लिए ऑल्टरनेट है एस्पिरेटर बोतल। एस्पिरेटर बोतल जो है उसमें नीचे से सैंपल जाता है, ऊपर से निकलता है पानी, ठीक है। तो एस्पिरेटर बोतल में सैंपल के एक रबर फ्लेक्सिबल ट्यूब लगा के सैंपल उसमें डालो, 10-15 मिनट उसको फ्लो करो, उसके बाद ओआरपी हैंड हेल्ड ओआरपी मीटर का प्रोब उसके अंदर डाल दो। ओके सर। तो आपको एक इंडिकेटिव ओआरपी मिल जाएगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा लेकिन इंडिकेटिव नियरेस्ट टू 90% मिल जाएगा, नियरेस्ट 90% एक्यूरेट ओआरपी मिल जाएगा। तो वही अल्टरनेटिव सर उसमें। हाँ। अच्छा ओके सर, आई विल ट्राई सर अभी। हम्म। ओके सर, अभी सीओडी बीओडी जो सीओडी कुछ चेक करते हैं, उसका कुछ कन्वर्सेशन फैक्टर है क्या सर, मतलब सीओडी टू बीओडी कुछ कन्वर्ट करने के लिए? नहीं है, नॉर्मली 30% बोला जाता है। सीओडी बीओडी विल बी 30% ऑफ सीओडी नॉर्मली, ऐसे ऐसे ही बोलते हैं। और ऐसा होता भी है, पावर प्लांट में ऐसा होता भी है, लेकिन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में नहीं होता है, पेट्रोलियम या फर्टिलाइजर में नहीं होता है, लेकिन पावर प्लांट में ऐसा ही होता है। अच्छा, उनका केमिकल हेवी बीओडी विल बी 30% ऑफ सीओडी। अच्छा, ये मतलब मैक्सिमम मैच होता है सर, ये मैक्सिमम मैच होता है पावर प्लांट में। मतलब मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पावर प्लांट का मैच होता ही है। अच्छा ओके सर। सर अभी लेकिन ये सीडब्ल्यूपी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, कुछ मतलब कोई डॉक्यूमेंटली प्रूफ नहीं है, लेकिन मैक्स मोस्टली मिलता है। पहले सीपीसीबी ने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी दिया था इसका, लेकिन बाद में उस डॉक्यूमेंट को विड्रॉ कर लिया सीपीसीबी ने, मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। ओके सर। अदरवाइज पहले ये डॉक्यूमेंटेड भी था ये। ओके सर, लेकिन पावर प्लांट में मोस्टली मैक्सिमम मैच हो जाता है सर, आपका कहना है? हाँ मैच होता है। ओके सर। सर अभी वो सर कैन आस्क सर? हाँ सर अभी अरविंद सर का जो क्वेश्चन था ना सर, ये आपका वो आर्गोनो फास्फेट, आर्थो फास्फेट और डेल्टा फास्फेट, ये डेल्टा फास्फेट मींस सर आर्गोनो एंड आर्थो का डिफरेंशियल सर, या फिल्ट्रेट करके हम लोग चेक करते हैं सर? वही फिल्ट्रेट करके चेक करोगे तो और तो निकल जाएगा ना। फिल्ट्रेशन करके जो नीचे जो आएगा वो ऑर्गेनो आएगा, जो आपका फिल्टर पेपर पे आ जाएगा वो ऑर्थो होगा। हाँ सर, समझ गया? नहीं अभी हम लोग, अच्छा जो डेल्टा मतलब फिल्टर पेपर करने से वो नहीं होता सर? नहीं, फिल्टर पेपर करने से ही होता है। जो फिल्टर पेपर के ऊपर बचेगा वो ऑर्थो है, जो नीचे पानी में आ गया वो ऑर्गेनो है। ओके सर,
वही मेरा डाउट था सर उस टाइम, वही पूछना था मुझे। हाँ ओके सर। सर अभी वो सिर्फ फास्फेट हो गया, अभी जो फिल्टर करेंगे सैंपल, जो भी नॉर्मल एक सीडब्ल्यूटी सैंपल करेंगे, उसमें हार्डनेस या जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम ये भी कुछ मतलब डिफरेंस मिला सर मुझे, क्या उसमें भी कुछ एक्सप्लेनेशन रहेगा सर इसके लिए? मतलब क्या क्या डिफरेंस मिला? नहीं, अभी जैसे अभी आर्थोफॉस्फेट के लिए मैं फिल्टर किया हूँ ना सर सैंपल को। हाँ वो मिलेगा, हर बार हर टाइम मिलेगा वो आपको, फिल्टर करने हाँ पे सर। डिफरेंस मिलेगा ही आपको। नहीं मतलब उधर क्या क्या मतलब क्या देखो क्या देखो मतलब जो जो डिफरेंस जो आए? जो आप नहीं देखो जो जो आप कलर में कैलोरीमेट्रिक कर रहे हो, उसमें तो 100% मिलेगा आपको डिफरेंस। ठीक है, ओके सर। जो आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक या कैलोरीमेट्रिक कर रहे हो, उसमें तो 100% डिफरेंस मिलेगा। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम में भी डिफरेंस मिलता है, क्योंकि ये मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट ये भी बनता है, जो कि आप एक्चुअल ओके में सर। ईडीटीए में जब करते हो, मतलब बिना फिल्टर किए करोगे तो ईडीटीए उसको भी कंज्यूम कर लेगा, और फिल्टर करके करोगे तो ईडीटीए के लिए वो कंज्यूम करने के लिए मिलेगा नहीं। नहीं तो फिर दोनों का मैक्सिमम जस्ट 5% रेंज में, 5 to 10% का ही डिफरेंस आ रहा है सर, मतलब अगर हाँ, परसेंटेज वाइज उतना देखें। ही होता है, उतना ही होता है। लेकिन ये तो एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए है। नॉर्मली स्टैंडर्ड में फिल्टर करके आपको हार्डनेस चेक नहीं करना है। हाँ सर। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, जो जो कोलेडल हार्डनेस रहेगा ना, ये मैंने उसमें लिखा ना, केमिकल सिग्निफिकेंस डिपेंड्स ऑन एलिमेंट्स, हर हाँ सर। एलिमेंट का कोलेडल बनता है। ठीक है, कैल्शियम का भी बनता है, मैग्नीशियम का भी बनता है, हर एक का बनता है। तो वो जो कोलेडल है, वो कोलेडल जो है वो आपको फिल्टर पेपर रोक देगा, ओके सर। उसीलिए जो डिफरेंस मिलेगा। ओके सर। हाँ कन्नड़ा कन्नड़ा नहीं आता सर, नहीं नहीं कन्नड़ा सर, वो नो अदर नोट। ऑफिस में हूँ सर, इसलिए हाँ दूसरा कॉल सुनाई दे रहा है आपको। सॉरी सर। हम्म सर आरओ जैसे कि 2 इयर्स का कुछ ट्रेंड अगर देखेंगे, प्रोडक्ट कंडक्टिविटी मतलब थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज ट्रेंड मिल रहा है सर, प्रोडक्ट कंडक्टिविटी। कितना है परसेंटेज वाइज, कितना इंक्रीज? सर अभी लगभग 60% तक इंक्रीज हुआ है सर। सॉल्ट पैसेज में बोलोगे तो कितना होगा? सर साल्ट इनलेट पास है। इनलेट वर्सेस आउटलेट, सर इनलेट इनलेट तो अभी कितना है? आपका ना सर अभी थोड़ा ईयर वाइज स्टेबल है, क्योंकि सीजन वाइज जितना मैक्सिमम जो एवरी ईयर मिलता है वैसे ही परसेंटेज में मिलेगा। आएगा ना यार, सॉल्ट पैसेज तो हाँ, साल्ट पासेज आउटलेट अभी हम लोग का आउटलेट लेस देन डिवाइडेड बाय 30 रेंज में आ रहा है। आउटलेट डिवाइडेड बाय इनलेट, मतलब सर परमीट सॉरी डिवाइडेड बाय इनलेट। सर 8%, 10 बिलो 10 आ रहा है सर, अभी अराउंड 7 to 8% आ रहा है सर अभी। खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गया आरओ का, चेंज करो आरओ को। सर आरओ का लाइफ खत्म हो गया, आरओ चेंज करना पड़ेगा। ओके सर, मतलब और कोई नहीं एवरेज चेंज उसको, करना पड़ेगा सर। हाँ देखो, यदि परमीट कम आता है तो फिर भी उपाय है परमीट बढ़ाने का, लेकिन कंडक्टिविटी ज्यादा आता है, मतलब परसेंटेज ज्यादा आता है तो कोई उपाय नहीं है। 3% तक ही अलाउड है एक्चुअल में। अच्छा, अलाउड 3% है। हाँ अच्छा ओके सर। यही लिखा था तो तुम्हारा वो डॉक्टर श्रीनाथ गुड़गुड़ कर रहा था। सर उसको बोलो पढ़ाई लिखाई करे, अब अभी भी एज नहीं गया है, डॉक्टर बन गया तो वाटर ट्रीटमेंट ही छोड़ देगा, ऐसा नहीं करने का उसको, तो बोलो पढ़ाई लिखाई करने के लिए। ओके सर। ठीक है, अभी रिजवान से क्वेश्चन लें। हाँ ओके सर, मेरा कंप्लीट हुआ सर। रिजवान भाई क्वेश्चन पीछे। Yes, yes, sir. Sir, actually, I want to tell you about our plant a little bit information before I further ask the question. Actually, we have a Siemens turbine. We have a 2 gas turbine, 400 megawatt each, and one is steam turbine, 436 megawatt. Total, we have a 63 megawatt power plant. And we have a 2 HRSG with the triple pressure boiler, LP
steam, IP steam, intermediate Hmm. pressure steam, and high pressure steam. Hmm. And we have LP drum. We have a IP drum, but we don't have a HP drum because we have a HP drum is a once through type, Benson type. Hmm. Okay, and the Siemens recommend us to whenever we have a tiny conductivity less than 0.15, then we convert from AVTO to oxygenated treatment. In the Perfect. oxygenated treatment, yes, in the oxygenated treatment, we will maintain 8.5 pH of Hmm. every circuit, Hmm. and we have a CPP 100% also. Hmm. But Hmm. my question is, we have a LP drum and IP drum. So Hmm. is it because 8.5 is very low in drums? We have a provision of ammonia in upstream of feed water, Hmm. and we have also provision of trisodium phosphate in LP drum and IP drum. So Hmm. they didn't tell us about phosphate dosing or ammonia dosing. They just tell us maintain the pH above 9.2 in LP and IP upstream water. LP और So IP का प्रेशर, how much is the pressure? LP और IP का प्रेशर कितना है? LP का सर है 5 बार और IP का 40 बार. तो आप दोनों में फॉस्फेट मेंटेन कीजिए लेस देन 1 ppm. Less than 1 ppm. Okay. और उन्होंने recommend just they give us a one limit of tiny conductivity less than 5. less than 5 ड्रम में 5. ड्रम Yes, में drum में. मिल जाएगा Drum में, yes, drum में 5 मिल जाएगा. डोंट वरी. और pH 9 से above रखें drum में. ना वो अपने आप आ जाएगा. आप 1 ppm रखो ना फॉस्फेट. 0.5 से 1 ppm तक फॉस्फेट रखो, आपको pH 9 आराम से मिलेगा. अमोनिया आपका आप यदि 0.4 भी रखते हो ppm तब भी आपका काम आ जाएगा. 100% CPU है तो अमोनिया पूरा CPU खा जाएगा. वापस उतना ही अमोनिया आपको डालना पड़ेगा. ठीक है, तो फॉस्फेट का कोई रिएक्शन नहीं होगा ऑक्सीजन के साथ. फॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ कैसे होगा यार? ऑक्सीजन के साथ होगा नहीं रिएक्शन. कोई कंफ्यूजन? हाँ ठीक है. कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए यार. फॉस्फेट का ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होगा? ठीक हो. ऑक्सीजन के रिएक्शन एक जो और क्वेश्चन है. नहीं ऑक्सीजन के रिएक्शन जो है एक्चुअल में ये ओटी में इसलिए जाना चाहते हैं कि वो हाइड्रोजन आपको बंद कराना चाहते हैं. ठीक है, तो आप लगभग अमोनिया और ऑक्सीजन दोनों डोज करोगे. आप ऑक्सीजन सिर्फ बंद नहीं करो, मतलब हाइड्रोजन सिर्फ बंद नहीं करोगे, आप ऑक्सीजन और अमोनिया डोज करोगे. ऑक्सीजन प्योरिटी इसलिए चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ट्रीटमेंट प्लांट में, ऑक्सीजनेटेड ट्रीटमेंट सिस्टम में आपको वाटर जब तक प्योर नहीं मिलेगा तब तक आप ऑक्सीजनेटेड ट्रीटमेंट में जा ही नहीं सकते हो. आपको बहुत तकलीफ होगी. आपका मतलब सिस्टम में इतना करोजन प्रोडक्ट निकलेगा कि आप परेशान हो जाओगे. और जहां तक इसका सवाल है आपका ओआरपी का, आपको वहां पर भी ओआरपी देखना है और ऑक्सीजन देखना है. ऑक्सीजन आपका 30 से 150 ppb होना चाहिए, 30 ppb से लेकर 150 ppb, और ओआरपी 50 मिलीवोल्ट्स के अबव होना चाहिए. 150 जहां पे डोजिंग करनी है या जहां पे ना डोजिंग नहीं, मेंटेन करनी है. वो डोजिंग तो पहले बहुत लगेगी, वो धीरे धीरे कम होगा 6 महीने 8 महीने में. शुरू में ऑक्सीजन डोजिंग बहुत लगेगी. आपको डेली 2-3 सिलेंडर खत्म हो जाएंगे. 40 बार वाले? हाँ, 40 बार वाले और 7 kg वाले. और इतना ही नहीं, आपको ऑक्सीजन जो है 99.999% प्योर चाहिए. आलतू फालतू ऑक्सीजन मत ले लीजिएगा. मेडिकल वाला ऑक्सीजन तो बिल्कुल मत लीजिएगा गलती से भी. 99.99. 999.
999. Okay. Right, sir. Okay, sir. एक और क्वेश्चन था. हाँ. सीपीपी के डाउनस्ट्रीम पे हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी मेजर करते हैं, कैटाइनिक भी करते हैं, और सोडियम भी और सिलिका भी. किस पॉइंट पे सीपीपी के डाउनस्ट्रीम में फिर से क्वेश्चन दोहराइए. सीपीपी के डाउनस्ट्रीम में सोडियम, सीपीपी के जी सर, सोडियम, सिलिका, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कैटाइनिक कंडक्टिविटी. ठीक है. और हम कब डिसाइड करेंगे कि सीपीपी एग्जॉस्ट हो गया? सीपीपी सोडियम पे पकड़ो. सोडियम पे और पीएच पे. पीएच 7 से ऊपर गया. ओके. और सोडियम 10 से ऊपर गया. सोडियम 5 का लिमिट होगा ना? ये 5 पे. हाँ, 5 पे कीजिए. हाँ वेंकट सर सीपीपी मींस सीपीपी नहीं मालूम क्या? कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट तुम्हारे पास भी तो है. सीपीयू तो सर वो सीपीपी बोला है तो चलेगा. हाँ तो वही. in Middle East it is called CPP, condensate polishing plant. Okay. ठीक है. if you go through their documents, American documents will always say CPP. Okay. Okay sir. हाँ रिजवान जी बोलिए. सर एक्चुअली सीमेंस सजेस्ट करता है कि इसको सीसी पे एग्जॉस्ट करवाएं 0.15. बट कुछ डॉक्यूमेंट कहते हैं कि बट क्योंकि पहले स्पेसिफिक बढ़ना शुरू होता है. एक्चुअल में क्या है, हमने जब तक चलाया है सीपीपी या सीपीयू को, तब तक हम लोग 0.06 0.08 में ही हमारा सोडियम निकल जाता था. ठीक है. 0.08 में हमारा सोडियम पास करने लगता था, तो हम उसको बंद कर देते थे. हम उसको रीजनरेशन में लेके चले जाते थे. तो अभी क्या है, आपको एक ये बनाना पड़ेगा डिसीजन ट्री, क्या पहले क्या बाद में, ऐसे करके. तो मेरे ख्याल से सोडियम को पहले रखना चाहिए, क्योंकि सोडियम से टरबाइन ब्लेड सीधे क्रैक करते हैं. और उसके बाद आपका जो कैटायनिक कंडक्टिविटी है उसको रखना चाहिए, क्योंकि कैटायनिक कंडक्टिविटी एक्चुअल में हमको जो मिलता था 0.06 0.054 पानी मिलता था सीपीयू के बाद. स्पेसिफिक और कैटायनिक दोनों सेम मिलता था हमको. ठीक है. तो ऐसे केस में यदि आपको कैटायनिक कंडक्टिविटी कभी 0.15 से ऊपर जा रहा हो, तो जरूर आपको उसको रीजनरेशन में लेके जाना चाहिए. और पीएच भी इम्पोर्टेंट है. हाइड्रोजन साइकिल से निकलना नहीं है, हाइड्रोजन साइकिल में ही रहना है. अमोनिया साइकिल में कभी नहीं जाना. सीपीपी में 2 साइकिल होते हैं ना, मालूम है ना, हाइड्रोजन साइकिल और अमोनिया साइकिल. यस. तो हाइड्रोजन साइकिल में ही रहना है, अमोनिया साइकिल में नहीं जाना है. अमोनिया साइकिल में गए तो प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएंगे आपको. ओके सर. तो अभी हमारे साथ एनटीपीसी. हाँ एक और है. जी सर. सीमेंस कहता है क्लोज सर्किट में हम सिर्फ कार्बोहाइड्रोजाइड डोज करवाएंगे 5 ppm क्लोज सर्किट. गलत है, मना कीजिए. कार्बोहाइड्रेट से CO2 निकलता है. CO2 निकलता है तो पानी का पीएच भी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी भी हाई होगा. ठीक है. पीएच भी घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा. वो गलत है. कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल मना कीजिए, हाइड्रोजन पे जाइए. हाइड्रोजन पे. हाँ. तो हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा लो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ. हाँ क्लोज सर्किट में, क्योंकि तो कार्बोहाइड्रेट भी कहाँ करेगा यार? कितना टेम्परेचर है? 80 डिग्री है? नहीं, 50 डिग्री. 50 डिग्री में तो मैक्सिमम 50-60 में तो ना तो कार्बोहाइड्रेट करेगा, ना तो अमोनिया करेगा, ना तो हाइड्रोजन करेगा. कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा. उसके लिए तो सोडियम सल्फाइड पे जाना पड़ेगा. ओके सर. ओके. थैंक यू सर.
ये कार्बोहाइड्रेट भी रिएक्ट नहीं करता, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है आपके हाइड्रोजन में, फिर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। ओके ठीक है, तो रिजवान भाई आप ड्रॉप ठीक आउट कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि आप गैस ओके सर, बेस्ड है, ओके अभी हम लोग कोल पे बात करेंगे, तो आप ड्रॉप कर ओके सकते हैं। हाँ ओके सर, थैंक यू। ओके। We have one uh, uh, from NTPC, uh, Ma'am Kanupriya Vyas. She may be having some questions, and we are also having Mr. Indranil Gupta, who is a coal expert who knows about all the three: ASTM, IS, and ISO. So, anybody having any questions about coal, he can always talk to Mr. Indranil Gupta, who is part of our organization, and he's actually director for GenAL, also where we contribute as a technology provider for making augers, coal sampling augers. Okay. And Bhavesh Bhai has also joined. Bhavesh Bhai is an expert in formulating cooling water treatments. Ma'am, now you can ask questions if you have any. Good evening, sir. And good evening, all. Thank you for introducing me. Yes, ma'am. Your question, please. Sir, I have, as Samantha sir is knowing, I have just joined this water and this is an odd time in the learning phase, sir. Yes. Sir, 2-3 questions I had, sir. More insight I wanted because of your experience, sir. See, sodium analyzers online are available in all SWAS, sir. I wanted to procure one sodium analyzer, so it can help me with grab samples also, sir. If at all Okay. sometimes needed calibration. Okay, So it I is was available. So may I or may I Yeah, ask please go on, ma'am. Sorry. no issue, sir. So the models that I was seeing, one of them from Thermo I had seen, sir. It was an online meter only, just like other sodium analyzers for that low level of sodium. But they have a provision of testing grab samples also, sir. About 10 to 11 lakh cost approximately they are. So, sir, I wanted to ask whether that is fruitful because any other stations is not using that model, sir. Everyone there is online only. My whole thing was that though there it is available online, but check if it is available in my lab also for tanks. Fill headers. I'll be putting that, and if it has provision for grab samples, so do those grab samples actually give results, sir? Or Yes, it's an they do. eyewash? They give results. True. And this Yes, sir. thermoscientific thing works. That is also true. We had this in a Siemens plant at Pagutan, Bharuch. Okay, and this was working well, and the graph sampling system was also working well. To rinse the complete system, we required 1 to 1.5 liter of sample. 1 to 1.5. But at that time, my least count was 10 ppb. 10 ppb. then Now, how I'll much? have to check again. They Yeah, are here. saying, sir, they'll be 2 to 10, sir. They are saying 2. Very good then. Now, I'm talking about 20 years back, 2003. 2003, I was using this machine. The offline model that they have, sir, they are suggesting that it is from 20 ppb onwards. That doesn't matter. That doesn't apply to it. Don't go for these offline models. If at all you have to go for offline models, there are Chinese models available. They work well. They are with all the Adani power plants. All the Adani power plants have that Chinese model. All of them, not one. At least six plant have those Chinese models, and they work very well. And If I recently, then it will be easier for me to search. yeah, that is ion selective electrode, and that cost within 2 lakhs rupees, including GST. Recently, Mr. Ravi Kishore
who is there with in this discussion. Ravi Kishore has used that in his lab. Ravi, Sir, so how do you find that? Is Make that useful? which one? Sodium analyzer, no? Yes, yes. This is giving best results. We are measuring steam samples as well as drum samples. We are getting Yes. good values. And this is lab model, madam. It Lab is model. okay, costly. Grab lab. sample we check. And Ravi sir, the make is the Chinese make, sir. make. It is a Chinese make in India. A Gujarati company called Dadu That Enterprises. I may be having screenshots. Even Ravi also can help you out. He can also send you the that book copy and all those things. okay. Any one picture so that I Manual. can start. Anyone, sir, manual or name, screenshot, anything will do. Then Okay. rest I'll search, sir. Yes, yes. Okay, I shall We'll send get the that. instrument photo first. Yes, yes. You will Yes, find sir. the model number also. Yes, Okay, yes, okay. Thank yes. you so much. That's great. You'll have madam's email ID in this group only, yeah. In the Okay. email I have sent. In that you will find madam's email ID. Okay. Okay, sir. I shall share. And she's there in our WhatsApp group also. Okay. Okay. Thank you, Ravi sir. Sir, one more Okay. thing I wanted to know. We had discussed about that ferrocene method for iron analysis. Sir, what I've been observing is though we discussed, no, it will be suitable for 2 months and like that. So how long I can do that test and all. So what I'm observing is that even after 2-3 days also, many a times that graph is giving same absorbance for all these standards. So I keep the gap more between standards because the range is up to 500 ppb, sir, for the test method, sir, for iron. And that is there in Though I NTPC SOP also, na ma'am? Yes, sir, it is there. And what practically I am seeing is that if even one day passes, the same day it's okay. The graph is results is everything is okay. Even if the ferrocene that I've made it's not having any change, that means it has been prepared correctly. The next day also, when I do the standards test to prepare the graph note, the absorbance is same for all the standards, sir. Yes, And it has not happened once. that Ravi has also seen. Actually, me and Ravi are working in tandem at one place for all these things, and we have also seen these disturbances in iron analysis itself. Yes, sir. Yes. For ferrocene, madam, I think you will get a liquid reagent. Directly inbuilt graph will be there in hack spectrophotometer. Spectrophotometer, I have same used that. thing. I have to. Now it is not possible to That change is a never spectrophotometer. it's not, no, it's always, you can always go for acquisition, but obviously, sir, there is a channel and it may take time. Till that time, I just want to know that You have when to. originally we know that the reagent should last for 2 months, if not 2 months, at least a week. And we are taking utmost Reagents, care you are in telling graph is reagents every week obviously the there may reagent be a only. chance they will change. So that all Yeah. care we are taken. And I have in your book, sir, that was potassium chromate method, no, for calibration of graph. I learned it in one class, a small section. That also I did, sir, and it was a very straight line, sir. Then I repeated the test method, but still this absorbance came to be same, sir. Yes, yes, and that's what we are also observing. I've actually been trying for last 8 months the same thing there, but now what I'm finding is I have to go into Ferrover is better. If I go into Ferrover pouch method 3900, that is much better. That thing is giving me much better results than what I'm Is making. it similar to that Merck test kit, sir? Uh, yes, it is for hack actually. Okay. It is for HSCH hack.
Yeah, hack But I use. That's why. but Lovibond has also come out with such pouches now. Okay, Lovibond. Recently, To them Lovibond I has can also come out. contact. Yeah. Okay, I'll check with Lovibond, sir. Yes. But you are Sir, not having a hack spectrophotometer. the spectrophotometer of other make is available with us, sir. We have Shimadzu. 5, sir. Yes, sir. Mm. And in one gem procurement, we also got one Chinese, one Rigol, one only. That also we got, and I've read that calibration. It's otherwise, sir, for all other graphs, as long as the hardware is okay and the spectrophotometer check that we have learned from you, that's okay. So I think the machine is okay, we can say. Only in IM this problem is there, sir. In none of the graphs, it's In stable, actually sir. in iron only this is the problem. And if you are not having Sir, hack, actually, if you're not having hack, then we have to find out a solution. sir, actually, I tried this iron analysis through IC also, sir. Transition metal detection also, and through C4 channel also. So there I do get results, but obviously the organic methods Not you always yeah, want to not rely on. higher. They come very low actually. Yes, very low, sir. So Yes. obviously in system, sir, it's the limit is 5. So I do have an option of ion chromatograph, and we are following that. But I just wanted to see that the old method is working also for a cross check. No, only one method means No, the we'll be worried. old method used to work. Actually, what we used to do, I tell you, ma'am, in our times, what we used to do, we used to make everything on that day of doing. Exactly, sir. Exactly. That the same day if I prepare ferrozine and put a graph, it is coming good. Yes. But though we all know that it is to be stable for 2 months, it's costly also. The next day when I make the graph, the absorbance is a straight line for all the concentrations. Yes. It's not straight line. And That's that was happening to us also. So what our schedule was weekly. So on that day we used to keep a separate person for 5 hours for iron analysis itself. exactly. So I also did the same for cross check, but I thought maybe something I am. No, you are absolutely correct. And this is our observation also. Then I turn into when I started using hack above 3900 spectrophotometers. Then I turn into hack pouches only. I do not go with anything else because that is much easier. And uh, in this time now, in your time, your main problem is manpower allocation for a particular job. So much manpower is not there. So at this point of time, we started using hack and their pouches. Ravi also may go into pouches in near future if his management allows. And if you're not For having iron, hack, we have to. yes, Ravi. Yes, sir. For Correct. iron as well as You have copper to. and some parameters, hack Yes, is we have a flexibility that it is easier. Yes. Ma'am, what are the makes of your this thing? You please let me know. Let me find out. Let me find out what is the best practices among other units. Because in Tata Power, we were more dependent on Shimadzu. Shimadzu and some was Orion, I think. Shimadzu, in repeatability, it is a very good meter, sir. Double beam. That is double beam actually. Double beam. Repeatability is very super. Single beam instruments for lower, this has already been stopped, na sir? No, it is not exactly stopped. Actually, if you have 100 mm path length, you can still use it. Okay, sir. For us, they have clearly, matlab, if a higher version model is available, so not to go for lower like that, they have just to send. And sir, but yes, hack 3900 is single beam only. Yeah? Okay. Actually, path length is more Gem important. is also. I'll tell you seriously.
even if you give me, I I remember in 2018-19, I fully commissioned your NTPC Khargon on Yes, sir. on a manual spectrophotometer. Okay. I think I've Uh, heard these. So, yes. Yeah. On a manual spectrophotometer, I did all that commissioning. Um, Spectronics, or what is that? Some companies there. Huh? I think it's NL SI Systronics, Analytics. Systronics, sir. Systronics, yes. Systronics. I use Systronics, and that also I used to uh, what do you call, मतलब एक जगह खींचते हैं, फिर उसमें पाथ लेंथ बढ़ाते हैं, फिर 100 mm का क्यूवेट डालते हैं, फिर फिक्स बिल्कुल करते हैं सिंगल वो, हाँ जी that kind of thing we used. So So with your I experience commissioned the in plant. well, 1.5 years I used that there. so your experience will use any instrument well. Yeah, that was actually that I took my first order, na, O&M order. Mhm. My Yes. first O&M order was that, and it was Indranil Gupta who got that order. He is with us now. Okay, sir. Sir, one more thing is about sir this inline filters sir, for CRUD analysis, sir. For CRUD analysis. CRUD analysis, sir. CRUD. CRUD, sir. CRUD analysis, sir. So already these are from Organic Times. These have been installed, and that 1 liter CRUD analysis method, simply that weight method, sir, gravimetric Yes. method is in use for spot check for 1 liter samples, and for unit startups and all, you know, sir, that inline filter for 100 liter samples to judge the complete health of the system. That's practices there, sir. So recently, these inline filters only from after standardization were available from Merck, sir. So I had called 2-3 people in Merck, including the person who is seeing India sales, and they said that it's not currently available in stock. And 6 weeks time they are wanting, sir. In such agile environment, 6 weeks is too long, sir. No, So if you 6 can help week me out with it. mug will take 6 weeks. No. Yes, sir. But are there any other makes available for inline filters, sir, where we can change the filter, not the disposable one, sir? Can you send me the dimension of that? Yes, sir. Yes, sir. Exactly. I'll WhatsApp, sir. Okay. I may get it here. Okay, sir. I'll Maybe send the dimension. maybe it is available with Millipore. I'll check. Sir, I've called them, but probably person to person it may differ, sir. I'll just send the dimension, sir. Millipore said no, na? Sir, Millipore said no, sir. Okay. Paul, I have not asked, sir. I've asked only 2 people, Millipore. That too after their merger. Now I can ask them. That's why. And Merck, sir. is it on a sintered glass? Sir, previous ones were, now there are some polycarbonate, some material like that with their screws, sir. So you open them, you put the filter, just like plastic ones they appear, sir, and you put the filters because It's like, is it not like your SDI meters now? somewhat like that. SDI analyzers. Yes, sir, somewhat like that, but it's just basic, that filter holder we can call it. Those are Okay, filter holders. send me the picture. I'll Send find it picture out. and dimensions and send. Okay, sir. If that holder, then we can use anything. Yes, sir. Yes, then any filter we can use. Yes. Okay, sir. And sir, one more thing was that spectrophotometer I have recently purchased from Thermo Scientific, sir. And the calibration, previous one I was seeing, the calibration that we used to run was almost 10-15 days. I used to see that there was not much change. It was, reliability was there. Now that calibration, it
rapidly, sir, it goes out of calibration. What to call This it? lamp needs to be checked. Lamp. Oh, Lamp intensity is going down. lamp intensity. Okay, sir. Lamp intensity is going down because this will happen only if the lamp intensity is going down. Because Sir, it has to be observance, checked from OEM only, sir. yes. E- No, even lamp also has to be purchased from OEM now. They might have already supplied you a spare lamp with this. No, probably, sir. I did not because I couldn't find this no, so I've not How looked into much that. time it has been now? Sir, I think it's 10 months. Sir. Hey, they will give you free of cost support. Okay, sir. Ask them. Okay. No issue, sir. I didn't look for that aspect. But every time happening or means you are it got preparing new disconnected. solutions. So we are, you are asking about the standards, na, sir? We are not preparing ORP standards. So we have purchased them from the OEM itself, and we use those standards only, sir. And once we take out of the bottle to check, then we dispose, sir. We do not repeat. Yes. It will not be any more useful. More food useful. So, but we have procured that from OEM only, sir. Thermoscientific only. For ORP only, is this a problem? Yes, only for ORP. This is the problem. Then it is not the lamp. Then it is not the lamp. For only ORP means it is something else. Only with ORP this is happening, sir. Can you re-explain me the problem? Can you explain Sir, me the problem once again, please? suppose Because I may have missed something in between. Sir, what I'm observing is that for all other parameters, sir, suppose I'm putting the standard, I'm checking the calibration or doing the calibration and then validating it with standard. It remains so. When I go for the next calibration in 10-15 days or week, then what I see is that the deviation is not more in any other parameters. Suppose pH 7 was there, maybe 7.12, but not a huge variation, not beyond this. But in ORP, what happens that at 263 and 475, if I have done and I've checked validation for calibration, I've done. Then when I repeat it after 10 days, sir, that shows huge difference. Again, that 263 appears to be around 200 only, sometimes 220, like that. Wide gap is there, sir. But which sample you are validating with it? It says standards only. Standards only. The validation check and calibration is with standards only, sir. No sample is used, sir, for validation. But why it should happen like this? If sample would have ORP. been there, I would have just, Now, ORP, normally spectrophotometer are not used for ORP. Okay, No, we have ORPs have. ORP meters only, sir. Acha, then ORP meter life is actually 6 months only, yeah? 5 months to 6 months. Then only we have exceeded that then. Simply. ORP meter probe life is 5 to 6 months only. It cannot go beyond that. Simply I'll change the probe. Yes, Venkat Krishnan. सर सर ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का भी लैंप है, उसका सेल्फ लाइफ कितना है सर? वो यार सिस्ट्रॉनिक्स में तो 7 साल चला है, हैक में 2 साल चलता है. only 2 years सर. ये क्या आवर्स बेस में कि नहीं एक्चुअल में इसका कोई पक्का नहीं है कितना चलता है. कोई लिख के नहीं देता है और हमको कोई पता नहीं रहता है. यदि इसको वारंटी पीरियड में खराब हो गया तो वो आके फ्री में चेंज करके देता है. यदि वारंटी पीरियड के बाद खराब हुआ तो आपको मतलब 6,000 से 10,000 का वो लगा के जाएगा. वो इस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर? वो लैम्प का वो देता है. उसमें शुरू में आपको कौन सा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैक है तो शुरू में लैम्प चेक करता है ना वो अपने आप. ऑटो लैम्प चेकिंग है इसमें हैक में. यस सर, होता है सर. हाँ, तो उसी में मतलब नोटिफिकेशन टाइप का आ जाएगा, मतलब डिस्प्ले में आ जाएगा वरना आपको रिजल्ट ही नहीं आना, बंद हो जाएगा रिजल्ट आना.
Okay, sir. मैं तो I understand that मेरे को तो सिस्ट्रॉनिक्स और लैप्ट्रॉनिक्स जैसा मीटर ज्यादा अच्छा लगता है, जो मतलब सीधा सीधा काम करता है, ओके सर। उसमें ज्यादा कुछ मतलब वो नहीं है। ओके सर, और एक डाउट था सर। भावेश भाई सर नहीं, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, अभी हाँ दादा। हम लोग ईएम चेक करते हैं ना सर कॉल में, इक्विलिब्रेटर मॉइस्चर। अब अभी भावेश सर भाई एक मिनट है, मैं मॉइस्चर के बारे में आऊंगा इंद्रनील गुप्ता के साथ। वेंकटेश, आपका जो कूलिंग वाटर क्वेश्चन था वो भावेश भाई से पूछिए। कूलिंग वाटर का जो क्वेश्चन था ना, एक बार भावेश भाई से पूछिए। रिगार्डिंग सीओसी सर। नहीं, रिगार्डिंग वॉट एवर इज देयर इन कूलिंग वाटर, आपको जो जो प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा सर, वो फ्रीक्वेंटली हम लोग का नोजल्स मतलब चोक हो रहा है सर। उसका मेकअप वाटर का टीडीएस क्या है और कितना सीओसी पे चल रहा है अभी? सर उसका मेकअप वाटर का आपका टीडीएस अराउंड आपका 900 समथिंग आ रहा है टीडीएस, मेकअप वाटर टीडीएस। हाँ। और आपका सीओसी हम लोग अभी फिलहाल हम लोग का 4.2 है अभी। हार्डनेस 300 है भावेश भाई। 300 मेकअप वाटर। और ये प्लांट भावेश भाई है YTPS, ओके। KPCL का YTPS। 300 ppm hardness in makeup water, huh? Yes sir, yes. Don't check bar so. So, and what is the treatment you are doing it now? नाम के वास्ते HSP बोलते हैं, लेकिन वो कुछ रहता नहीं है एक्चुअल में। हाई स्ट्रेस पॉलीमर बोलते हैं, लेकिन उसमें भी ये लोग सिक्वेस्ट्रेशन वैल्यू ढूंढते हैं 125, और दूसरे एक एंटीस्केलेंट डालते हैं। एंटीस्केलेंट में भी सिक्वेस्ट्रेशन वैल्यू 250 आना चाहिए, आता है 170 150 आता है। और एक एसिड डोजिंग अभी उन्होंने ज्यादा चालू किया है। पहले एसिड भी पीएच भी 8.6 रखते थे, अभी 8.2 रखते हैं। वो सही बोला ना 8.2 वेंकट? सर यस सर। वो 8.2 भी पीएच रखेंगे ना तो भी दादा वो क्रिस्टल फॉर्मेशन नोजल में आना अभी भी इतना ज्यादा कोई कम नहीं होगा उससे। नहीं भावेश भाई, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि वो जो नोजल चोक हो रहे हैं वो आयरन पीसेस से चोक हो रहे हैं। Oh my god. That means your treatment is not proper at all. नॉट एट ऑल यार। Not at और all. जो Yeah. और जो केमिस्ट्री हेड है ना, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर श्रीनाथ। डॉक्टर श्रीनाथ को मैं समझा समझा के थक गया, पूरे केमिस्ट्री लिख के दे दिया, वो फिर भी चेंज नहीं किया। अभी मैं इनके एमडी के पास जाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में, But फिर there are बात करूंगा। certain protocols that has to be maintained when we are treating these MS, CS, and other yellow metals. If that Yes. protocol is not maintained, then these kind of things are bound to happen, especially in terms of scale formation and chip out of your mild steel material. भाई conductivity of makeup water is 1700. They're running at 4.2 COC. So they have to do a proper treatment. Otherwise, how can they वो करना ही survive? पड़ेगा। हाँ 1200 ppm आपका हार्डनेस जा रहा है तो समहाउ और अगर हायर पीएच के ऊपर आपका स्केल फॉर्मेशन, आपका एलएसआई आरआई जो है वो स्केल फॉर्मिंग पे ही पूरा का पूरा जाएगा। वही बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं RSI 6.8 आ रहे हैं, मैंने बोला हो ही नहीं सकता है। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ 5.8 होगा, देखो 4.8 5.8 होगा। नहीं सर, इतना ही है सर। अरे नहीं, कैलकुलेट करो आप प्रॉपरली यार। एक मिनट रुको ना, मैं अभी कैलकुलेट कर ही देता हूँ तुमको ना। किल इनहिबिटर्स, एक मिनट रुकना।
सब याद है ना? टेम्परेचर सब याद है ना वेंकट? हाँ सर, यस सर। TDS कितना है कूलिंग वाटर का? कूलिंग वाटर का सर, जस्ट मिनट सर। अब कितना COC पे चल रहा है? 4.2 ना? 936 3700 जितना आएगा। 3700। हाँ 3530 सर। हाँ, so 3600 it is. 3600। टेम्परेचर कितना? 45? सर हाँ वही 43 तक। 47 जाएगा यार। रायचूर RTP से 47 जा रहा है तो तुम्हारे 45 कैसे जाएगा? 42 कैसे जाएगा? सर सैंपल टेम्परेचर और सर्कुलेशन टेम्परेचर सर। सैंपल टेम्परेचर रिटर्न टेम्परेचर 43 या 44 सेम रेंज सर, इससे ज्यादा नहीं जा रहा है सर। 44। कैल्शियम हार्डनेस 720 के करीब रहेगा। 590 सर। मतलब 600 पकड़ लो। हाँ 600। अल्कलिनिटी 90 सर। 90। ज्यादा 8.2 होगा। pH पे 8.2 pH पे 90 आएगा ही नहीं। 8.15 सर, 8.15 सर pH। तो भी 90 नहीं रहेगा, ज्यादा रहेगा। हाँ 90 नहीं रहेगा, 100% नहीं रहेगा। 120 है। 120 आएगा। देखो RSI 5.5 आ रहा है यार, देखो तुम्हारे सामने है। LSI 5.3 आ रहा है, इसको मैं 80 भी कर देता हूँ। 80 आपका गलत है, 7.8 pH पे 80 आता है। 80 करेंगे तो भी 5.9 पे हाँ टेम्परेचर तो इट इज अ लाइट स्केल फॉर्मेशन। ये 120 आएगा ना, एक्चुअल में 8.15 pH पे 120 आएगा। ये 80 तो 7.8 pH पे आता है भावेश भाई। यस यस सर अभी ये ये मेंटेन करते। यस सर टेल मी। तो ये तो दिस इज स्केल फॉर्मिंग यार, एब्सोल्युटली। और दूसरा दादा, मेरे को एक और चीज और जानना था कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या चल रहा है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम पे ओजोन इन्होंने लिया है, लेकिन अभी तक ओजोनाइजर चला नहीं पाए हैं। वो चलेगा भी नहीं, सक्सेसफुल भी नहीं होगा वो अपना कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट में। वो भी चला नहीं। और सेकंड है कि ये तो है पावर मैक की तरफ से वेंकट कृष्णन। एक्चुअल में जो प्लांट चलाने वाले हैं वो है KPCL, कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन। उनको मैं पूरा लिख के दिया कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको क्या डोज करना चाहिए, ठीक है। उनको नहीं समझ में आया है। अब मैं क्या बोलूं यार। नहीं तो मतलब ओजोन की जगह पे अभी दूसरा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? ओजोन की जगह में कुछ नहीं चल रहा है। ओजोन की जगह में आंख में धूल झोंकने के लिए NOB डाल रहे हैं, पानी जैसा NOB। तो वही एक्चुअल में वो जो नोजल चौक होने का जो कारण बता रहे हैं ना दादा, वो algae के MIC साथ है। तो हाँ वो MIC MIC है। वो जो आप बोल रहे थे ना चीप आउट हो रहा है करके, वही मैं इनको बोला भी MIC है, वो सीधी अब सी उसे चेक दिख करो। रहा है ये हाँ क्लियरली। मैं इनको बोला ही है, माइक्रोबायोलॉजिकल इंड्यूस करोजन है, चेक करो करके बोला मैंने। या तो ये बस कुछ नहीं है तो क्लोरीन टनर्स का प्रोविजन है वहां पर, वो क्लोरीन भी नहीं और डालते यूज हैं नहीं यार। कर रहे। नहीं, प्रोविजन नहीं है सर, क्लोरीन का कोई प्रोविजन नहीं है सर। क्लोरीन टनर्स का प्रोविजन है, आपको डिजाइन में प्रोविजन है। नहीं YTPS में नहीं है सर। YTPS में है, डिजाइन में प्रोविजन है, आपके पास वहां पर टनर रूम भी बना है। नहीं सर, नहीं बनाया सर। इवेपोरेटर नहीं डाला है, लेकिन टनर रूम बनाया हुआ है। नहीं सर इधर यार एनीवे आप ओजोनाइजर नहीं चला रहे हो तो कुछ तो आप बायोसाइड डालना चाहिए ना, अच्छा वाला ऑक्सीडाइजिंग, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड कुछ तो डालना चाहिए। TCCA डाल दो, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल दो, या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड डाल दो 70%, आपके बाजू में कर्नूल से मिलता है। नहीं सर, एवरी 15 डेज बायोसाइड डोजिंग अभी फ्रीक्वेंटली कर दिया। अरे उससे कुछ नहीं होता है, दैट आपके आपका यहाँ वो पर। आप कौन सा बायोसाइड डाल रहे हैं बताइए जरा प्लीज। अरे भाई मैंने वहां देखा है सिस्टम,
देखो वहां पर चेक करने का कोई तरीका नहीं है, वहां पर L1 बेसिस में सप्लाई होता है, वहां पर उन लोग HSP में भी सिक्वेस्ट्रेशन वैल्यू ढूंढते हैं और उसमें एंटी स्केलेंट में भी सिक्वेस्ट्रेशन वैल्यू ढूंढते हैं। और बायोसाइड का तो क्या है, आपने लिख दिया आइसोथायोजोलिन है, मैंने पानी में कॉफी डाल के दे दिया, तो आप कैसे चेक कर लोगे कि आइसोथायोजोलिन है कि नहीं है? सही बात है, बिल्कुल वही सही हो रहा है बात। वहां पर। वो तो L1 बेसिस पे है, 5 महीने में पैसा मिलना है। कौन कौन पैसा फंसाएगा यार? 70 रुपए kg में बायोसाइड देता है लोग। माय गॉड। तो ये तो क्या करेगा ये? जब तक KPCL टॉप से मैनेज नहीं होगा, KPCL टॉप जो है ना, जैसे NTPC में या कहीं पर जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना, वो जो MD बनता है वो टेक्नोक्रेट रहता है, मतलब ऑपरेशन से गया हुआ रहता है। यहाँ पर KPCL में जो MD रहता है वो हरदम IAS ऑफिसर रहता है, राइट। और IAS ऑफिसर को सिर्फ नंबर से मतलब है। लेकिन दादा ये BPCL जो है ना, वो अपना, सॉरी माय मिस्टेक, अपना ये BTPS, वो चेंज हो रहा है ना धीरे धीरे, वैसा ही ये भी हाँ चेंज मैं होगा। वही बोल रहा लेकिन हूँ, BTPS जो है वो भी वो कर्नाटका पावर के अंडर में ही आता है ना। हाँ, वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन YTPS में जो ऊपर बैठा है ना केमिस्ट्री वाला, वो बोलता है कि मेरा सब सही चल रहा है। ओके ओके। तो इसमें हाँ फिर तो वेंकट, मतलब इट इज लाइक वो इसमें चित्रकूट वेंकट, जैसा है, हाँ मिट्टी में सर डाल दिया है तो क्या करेंगे। एग्जैक्टली, इसमें वेंकट कृष्णन का कोई गलती नहीं है। या लेकिन वेंकट दैट इज, वो जो हो रहा है वो माइक्रोबायोलॉजिकल इंड्यूस्ड करोजन हो रहा है। और आपको मालूम है ना, आपका कंडेंसर को कैसे कितना मुश्किल से क्लीन किया है? हाँ, सल्फामिक एसिड और ABF डाल के क्लीन किया है। यस सर। वेंकट, आप हाँ? मुझे एक चीज और जानना है, आपका जो बायोसाइडल ट्रीटमेंट अभी जो 15 दिन में एक बार चल रहा है, वो आप सिंगल बायोसाइड पे जा रहे हो या ऑल्टरनेटिव कर रहे हो? अल्टरनेटिव कर रहे हैं। अच्छा, और बेस क्या है, आइसोथायोजोलिन और दूसरा? जस्ट एसिड बेस। एसिड बेस नहीं ऐसा मालूम होगा कोई, फिर। वेंकट हाँ कृष्णन ऐसा कोई NOB नहीं आता है। NOB नहीं आता है सर। ऐसा कोई NOB नहीं है। आई डोंट नो बट प्रोबेबली समवन इज मेकिंग यू फूल। हाँ, एक्चुअली वही हो रहा है उनके यहाँ, मैंने देखा है यार। और फूल बनते हुए मैंने सामने देखा है यार। मैंने अपने आंखों के सामने देखा है कि 150 को पास कर दिया गया 250 बोल के। कैसे पास किया वो भी मुझे मालूम है। बाकी मतलब ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कैसे पास किया वो भी मुझे मालूम है। NTPC से पास नहीं हो सकता वो चीज, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में ही पास होता है। सही है। हाँ, अब पूछो, कोल के बारे में क्या पूछ रहा था? ये सर जो EM हम लोग चेक करते हैं, इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर, अभी ये जो ह्यूमिडिटी चैम्बर अगर अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में कैसे चेक करेंगे सर? ह्यूमिडिटी चेम्बर अगर अवेलेबल नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ एग्जैक्टली वो आपको डेसिकेटर का नीचे सल्फ्यूरिक एसिड देकर एनवायरमेंटल कंडीशन मेंटेन करना है 60% RH। उसके बाद टोटल डेसिकेटर को ओवन में डाल देना है 40 डिग्री में। तो उसका कुछ SOP है सर? अरे बाप रे। IS 1350 पार्ट 1 से पार्ट 1। मैडम भी कानुप्रिया व्यास मैडम ने बहुत साल काम किया है ये कोल लैब में। इंद्रनील NTPC में मैम, हाँ मैम NTPC में कोल लैब को NABL भी बनाया है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। हाँ तो लेकिन ये बहुत क्रूड मेथड है और बहुत डेंजरस मेथड है इंद्रनील, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड नीचे डाल के। अनस्किल्ड को नहीं कराना, बिल्कुल अनस्किल्ड को नहीं, अनस्किल्ड को नहीं कराना है, एक भी बार नहीं कराना है। हाँ, अनस्किल्ड को नहीं कराना है। वेंकट कृष्णन, यदि आप अनस्किल्ड है तो मत करो ये काम, जल जाओगे आप। नहीं अगर ये प्रोसीजर अगर नहीं करना सर तो, लेकिन उसमें अगर कोई कन्वर्सेशन कुछ है सर, प्रोसीजर कुछ नहीं है, बाकी कोई कन्वर्सेशन प्रोसीजर नहीं है।
ओके इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर ह्यूमिडिटी चेंबर में ही हो सकता है. देयर इज नो अदर मेथड. मतलब दूसरा मेथड जो है वो आप पुराना केमिस्ट को ही आपको मिलेगा तो ही कर सकता है आपके साथ मिलके, या फिर आपको पैसे देके इंद्रनील गुप्ता को बुलाना पड़ेगा ओके सिखाने के लिए. आपको सिखाएगा, स्किल करेगा, सर्टिफाई करेगा, उसके बाद होगा आगे. इंद्रनील आप जसकेम के नाम से सर्टिफाई कर सकते हैं ना उसको जाके. हाँ हाँ 100%. ओके. बट इसमें क्या होता है ना सर, द नंबर ऑफ सैंपल्स एट अ टाइम बहुत कम होती है. बहुत कम होता है और एक्चुअल में करना ही नहीं चाहिए इस मेथड करना में. ही नहीं चाहिए. सल्फ्यूरिक एसिड को हैंडल करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. और सर वो जब उसका वो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होगा वो बबल करना शुरू कर देते हैं. दैट्स व्हाई. यस राइट. हीट ऑफ डाइल्यूशन होता है. तो मैम कुछ और प्रश्न है, क्योंकि हम लोग थे. अभी हम रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे. अभी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में. हम लोग मतलब करीब 2:45-3 बजे से हम लोग थे इसमें. तो काफी सारी चर्चाएं हुई हैं. तो एनीथिंग मोर यू हैव अपार्ट दिस, बट यू हैव टू सेंड मी दीज the size of that just after filter. just after the class I'll just forward, sir. Okay. And also that any photometer. Bhavesh bhai is a chemical manufacturer called Shreya INC, and we both are like partners together, working together for chemicals. Indranil Gupta is a auger manufacturer. There also we are like technology partners with Indranil Gupta. Recently, I got one mail from NTPC for vendor enlistment. I'll just check and do the needful if it is okay for me, because in the first group I could not see any consultancy or water treatment chemicals this thing. Now I think second group, when it opens, they will send it again. So Sir, I'll wait for that. Yeah. Chemicals at least. Yes, at least, yes. And sir, GEM also, sir. GEM we will do, ma'am. Actually this year, because all service have to go through GEM now, sir, compulsorily in NTPC. And GEM you will if you go for a picture of Mona Lisa, you may get picture of Hema Malini. Yes, and we'll have to accept also. If I have only specified nose, eyes, and ears separately. Yes, absolutely. But again, I mean, don't you think that the same thing will happen what Mr. Venkat is facing then sometimes? It will happen. It's bound to happen. Bound by rules, but I think like we have learned for past instruments also, it's not like that we are certainly deteriorating in the level of instrumentation. We are still able to buy. That means we are on the right track, and we'll learn more, sir, in due course. Actually, difference between state government power plants and NTPC is the knowledge base. The knowledge base is so strong that by they make very good specifications, and when they make good specifications, they can't be beaten. Yeah, that is the main thing. That is a key aspect when you go for a faceless and online tendering. Absolutely. You go and ask in KPCL any why will sodium will be leached, or sodium will first come out from ion exchange bed or RO membranes. They will not be able to answer you. But every NTPC chemist will be able to answer this. Absolutely. That is the basic thing, basic difference. Yeah. So Ravi, anything else? Yes, sir. Thank you very much for your long time you spent answering all our questions. I planned till 5:30 here.
It's almost 6 o'clock. but people even after participating, they're writing me, please send us the video. Arey yaar, But I'm asking your doubts. You want other doubts to be cleared. that people who were asking that 3 hours video, they may not be able to listen at a time. Yes. And Ravi, one more thing. People are also little bit worried about one Hmm. thing, that what others will think if I ask this question. That if they Ah, remove from their mind, na, they yes, yes. will go ahead better. Like I Venkat asked Krishnan. I asked a simple question, sir, on Yes. floating algae. What is the anything we Yes. may ask? It's not until and unless we clear the doubt, we Absolutely. keep it Like keeping in mind. Venkat Krishnan rightly asked all these questions now, because he understands that I need to learn. He need to learn and grow. Similarly, everybody should have done it. Yes. Anyway, ma'am, you send all those things, and also if whenever you feel like, you ask questions. Sometimes I was not able to help you in some or other guidelines, I think. I No could not issue, find sir. it. Yeah. No issue, sir. That was my auditor's remark, sir, that day. So like that, but then we were able to convince him through ASTM, and then he was, and testing, we did repeat test, sir, and we calculated MU then and there itself. So the problem got solved, sir. He could see all the calculations. Dada, you covered RO also in this? No, not yet. Nobody asked me questions. Some questions were asked earlier, but he left this thing. RO, he asked me some questions on RO, about how antiscalant works and what is the difference between, now how do you decide on cleaning, on all those things. So I recorded all those things. I will share you the recordings as well. And he's working in this some projects limited company. What is that? Vijaya. No, in West Bengal. Durgapur Projects Limited or something like that. Haldi Energy Limited, sir. Yeah, he also, Haldi Energy Limited was there, but another person was also there. Haldi Energy Limited person asked questions on RO. Yes, correct, Venkat. Okay. Yes, Actually, there Kanchan is Gupta ji. Sorry. हाँ भाई बोलिए. Actually, there is one equation in reverse osmosis, that is QFCF is equal to you know that, Dada, right? QFCF is equal to QRCR plus QP CP. If you have that this particular equation, and if your analysis is pretty accurate of 3 waters, feed, product, and reject, then even you can calculate Predict. also that you can predict also that how much milligram or how much grams or how much kg of the deposition every hour is taking place. Yes, absolutely, Bhai, absolutely correct. ये कंचन गुप्ता जी के नाम से पीताम्बर जी हैं क्या? हेलो. हाँ सर, मैं हूँ. हाँ, हेलो सर, नमस्ते. मैं ही. हाँ पीताम्बर जी, बताइए, आपके प्रश्न बताइए, क्योंकि सबके प्रश्न खत्म हो गए हैं और आप काफी अंत में आए हैं. हाँ सर, क्या है कि मुझे अभी ड्यूटी चल रही थी, तो ड्यूटी ऑफ हुई है, शायद वापस भी जाना पड़ जाए. वापस क्यों जाना पड़ेगा? सर मैं कोल में हूँ ना, तो कोल रैक पे सैंपलिंग की ड्यूटी है, तो वो रैक आएगी कोल सैंपलिंग के लिए, तो वहाँ जाना वापस पड़ेगा. तो आज आपके प्रश्न कोल पे होंगे? हाँ सर, कोल पे है, पर शायद ऐसा लगता है मुझे कॉलिंग आ गई है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा. तो आप नहीं, कोल पे होंगे तो मैं आपको मिस्टर इंद्रनील गुप्ता जी का नंबर भेज दूंगा. आप कौन से प्लांट में हैं? सर मैं ये राजस्थान गवर्नमेंट का प्लांट है, RRVNL के नाम से. इंद्रनील गिचली कौन हो? गए थे कभी? हाँ RRVNL पता है हमें.
आरआर फ्यूल का कौन सा प्लांट है? ये छबड़ा है, छबड़ा सुपर क्रिटिकल। सीटीपीएस। हाँ हाँ ओके, छबड़ा में गया था उधर, I've seen। तो आप दोनों ग्रुप में ही हैं? हाँ सर। हाँ, तो एक काम करूंगा, मैं आपको फिर इंद्रनील जी का नंबर भेज दूंगा। कोल के बारे में क्वेश्चन है तो, यदि पानी के बारे में क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और यदि आपको वापस जाना है तो बता दीजिए। हाँ सर, वो कॉल आया तो मैं शायद रिटर्न करूंगा, अभी थोड़ा देर जब तक नहीं आता तब तक देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ क्वेश्चन पानी के बारे में जो है, और फिर मैं सुनना नहीं है, पूछना है यहाँ पर। पानी के बारे में क्या पूछूंगा, जानकारी जो मिलेगी उससे थोड़ा सा मेरे लिए इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जानकारी मिलने वाली सारी चीजें हो चुकी हैं। अभी आप इतना लेट ज्वाइन किए ना, जितने लोगों ने प्रश्न पूछा था वो सारी चीजें हो गई है। अभी आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, या तो फिर मैं आपको वीडियो भेज दूं। हाँ सर, वीडियो भेज देना। अभी तो सर कोई प्रश्न नहीं है, और कॉल के बारे में कोई ऐसी होगी तो मैं, आप जो बोल रहे हैं इन दिन तो उनसे बात कर लूंगा, पूछे। हाँ, ऑर्डर देना लेकिन अपनी तरफ से। हाँ सर। ऑगर खरीद लो एक यार, ऑगर। हाँ सर, अभी तो बात करते हैं प्रशासन से, अगर वो होगा तो फिर ऑगर के लिए भी अभी तो मैनुअली करा रहे हैं। हाँ, मैनुअल बेकार है, ऑगर खरीदो यार। सर, हाँ ऑगर हाँ के जितने भी रिक्विजिशंस है ना सर, हाँ, वो सर एक भी केमिस्ट्री से मूव नहीं होने वाले, सारे फ्यूल मैनेजमेंट से मूव होने वाले हैं, सब स्टेशन से सर, बी इट ये स्टेट तो बी इट सेंटर। ओ स्टेट में भी? यस ओके, सर। ठीक है ठीक है। ये मेरे को लग रहा है नेक्स्ट सीबीसी गाइडलाइन का भी है सर, फ्यूल मैनेजमेंट को, क्योंकि उनको क्लियरेंस लेना है सेफ्टी सर। यस 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 यस, ओएचई का भी ये तो है, सही बात है। ये मैंने ऑगर के लिए मैंने एक्चुअल में यहाँ पर बात करी है बीटीपीएस में, लेकिन मैं तो एक्चुअल में सिर्फ टॉप लेवल में मिलता हूँ ना, तो इसीलिए मुझे पता नहीं नीचे कौन उसको ड्राइव करेगा, नहीं मालूम है। तो बीटीपीएस बेल्लारी थर्मल पावर प्लांट में ईडी एग्री किए हैं ऑगर खरीदना है करके। ठीक है मैम, समझ गया। तो हाँ, तो फिर हम लोग अभी इसको बंद करें, मैं वीडियो फिर सर्कुलेट कर दूं। ओके सर। और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके सर। ठीक, ओके ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। ओके दादा, थैंक यू। ओके।